and have the right to express, if necessary, dissenting opinion to find what is right or wrong and to take any decision. No development is meaningful without involving the people for whom it is intended. Science helps us to develop a rational outlook and along with modern technology enrich our knowledge base to participate in fruitful discussion and debate. Modern technology also enables us to reach to a large number of people living even in a very remote corner of the country as well as to those who live outside. Right to dissent and to speak fearlessly which one believes to be true is one of the most important aspects of a true democracy. But unfortunately at present, in our country, that very basic right is brutally suppressed and the dissenting voices are harassed in all possible ways, put behind bars, and in some cases even physically eliminated. Modern technology is used to spread falsehood, a culture of intolerance, pseudoscience in the name of science, and extreme irrationality, thus making the society a dangerous place to live. This is posing a serious challenge to the science movement, which aims to spread scientific temper, rationality, to find enjoyment in living together and other human values. When we talk of self-reliance, we definitely do not mean something similar to that of a self-sufficient village economy supposed to exist in our country in earlier periods. In modern day world, exchange of ideas, technology, export-import of goods are very common. But at the same time, we should have proper scientific and technological base for knowledge creation and production of industrial and agricultural goods to meet the requirement of our growing population. At the dawn of independence, our country was dependent on other countries to meet even the bare necessities of our people. The giant efforts were taken to build up heavy industries in many sectors, especially in steel, coal, chemical and pharmaceutical products, machinery for mining, electricity generation, etc., to develop a self-reliant economy. Several technological and scientific institutions were built and existing ones upgraded. In spite of many loopholes and shortcomings, the term self-reliance became a key word in our economy. The story is well known and needs no repetition. If we talk about scientific research, the story behind the formation of the Research Institute, presently known as Indian Institute of Chemical Biology, may be mentioned. The foundation of this institute goes back to the later period of colonial rule, when two young Bengali doctors decided to give up lucrative jobs in the then Indian medical service and establish a research institute for carrying out research on diseases, mainly gastroenterological, which were and still are major problems in our country. European scientists were naturally not interested to do any research in that area. So along with carrying out research in most advanced areas of science, there is need to carry out research in some areas, keeping in mind the specific needs of our country. It may be mentioned that in spite of having many success stories, we still use only a small percentage of the technologies developed within the country in our industries and related sectors. So there is enough scope for our scientists and technologists to change the situation. But unfortunately, those who are in power think otherwise. Instead of carrying forward the task of building self-reliance, they have chosen a path just in the opposite direction. So far as the question of climate resilient development is concerned, we have many technologies already available to take a path for climate resilience development. Also, many more such technologies may be developed. But the main hurdles lying on this path is the greed of the rich people, which knows no limit. Uncontrolled exploitation of human labor, as well as that of the nature by the rich all over the world, and the vulgar way of their lifestyle have led us to a situation of unprecedented economic disparity and to the danger of global warming. The danger of over-exploitation of human labor was realized even in the 19th century, even by a staunch supporter of British imperialism, Lord Macaulay, who, while extending tacit support to the then ongoing movement for restricting working hours in British factories, commented that unless it was done, England would soon have a large number of young people of retarded physical and mental health, incapable of contributing any branch of human knowledge.
Similar comments may be made for over-exploitation of the nature which are introducing so many distortions. Unless it is stopped and vigorous efforts are taken to limit the damage already done, climate resilient development will remain a far cry. But the question is, who will bail the cat? I have no special expertise in the subjects mentioned above, so I am waiting eagerly for the outcome of the Congress to enrich me even at my advanced age. Thanking you for all your patience. Thank you. Thank you, sir. The theme of the Congress is Science and Technology for Self-Reliance and Democratic Climate Resilient Development. Now, this is the term of the AIPSC President to speak over here regarding the theme of the Congress as well as the 18th AIPSC. Professor Satyajit Roth, President, All India People's Science Congress. Thank you very much. What I was just given as a job is entirely beyond me. तो ये तो हमसे नहीं होगा कि 4 दिन का जो उत्सव यहाँ पे होने वाला है, that I should summarize the theme of this diverse group of independent, skeptical, interested people come to debate the problems that face us as a people, as a country. So instead, I'm going to take just a little bit of time to tell you a couple of small stories. So a first story is, you will see a lot of saffron ribbons on books on the dais and one green ribbon. So there was, as is obvious to some of you, there was a little bit of, shall we politely say, back and forth amongst those of us on the dais about what is the significance of this. And our consensus was that there is no significance to colors. We do not accept the primacy of any one color. Not only do we not accept the primacy of any one color, हम किसी रंग को किसी और के हवाले भी नहीं करते. हर एक रंग हमारा है. सारा इंद्रधनुष हम सब का है. तो ये जो मुद्दा है, इसी को लेकर मैं आज की तारीख में पिछले चंद सालों में बहुत जिस मसले का जिक्र हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं. और वो मसला यहाँ उपस्थित कईयों को अच्छा जाना पहचाना है, बिकॉज दैट इशू is one of those very prominent components of this strange structure that we have had foisted on us called the New Education Policy 2020. And many of you are familiar with this. जानते हैं आप, भुगतते भी हैं आप NEP 2020 के असरात को. So one of those components of the NEP 2020 is a strange creature called IKS, Indian Knowledge Systems. So what is Indian Knowledge System? How are courses in Indian Knowledge System to be developed in schools, in colleges? How are the requirements that are either implicitly or explicitly stated in the NEP 2020 for Indian knowledge system fulfillment to be carried out? How do you get around it? How do you get into it? All of these have been questions that have been debated quite extensively amongst both votaries of present ideologies and many of the rest of us.
here is a position that is allied to the position of the colors of the rainbow. What is an Indian knowledge system? भारतीय विज्ञान प्रणाली चीज क्या है आखिरकार? और मैं मानता हूं कि any knowledge that is created by, intended for the people of India, working in partnership with each other and with people outside India on equal grounds in dignity and mutual respect, is an Indian knowledge system. We do not recognize anything other than a universal, shared, and intensely inclusive system of acquiring evidence-based knowledge about the world, learning from our past, learning from our forebearers, but not being limited by them and their knowledge, learning from our neighbors on grounds of equality and mutual respect, and using what we learn in the interests of everybody. If that's not an Indian knowledge system, then we should be ashamed to call anything else an Indian knowledge system. So, here's my little story. And it comes, as usual, वो ऐसा है ना कि ultimately you go back to where you came from. मराठी में कहावत है कि रिकामा नावी भिंतीला तुंबड्या लावी. In simple terms, it means if the barber has nothing to do, he shaves the wall. So, I'm going to go back to my subject. मैं जितना जो कुछ रिसर्च का काम करता था वो प्रतिरक्षा प्रणाली को लेकर, इम्यून सिस्टम को लेकर था. तो इम्यून सिस्टम कैसे उभरती है, कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या मुश्किलें उभर सकती हैं, इस तरीके का काम. तो उस क्षेत्र में से मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इंडियन नॉलेज सिस्टम वाली मिसाल. और उम्मीद है कि आप देखेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो अभी मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया वो उससे एक तरीके से सामने आ जाएगा. सो वी हैव, although many of us would like to forget this, we have very recently gone through a pandemic. Not that we have learnt any public health lessons from it of any enduring kind, but we have gone through a pandemic. And one of the things that the pandemic threw up for us was a vaccine. Everybody in the room is vaccinated against COVID. Is there anybody in the room who is not vaccinated against COVID? So, vanishingly small numbers, certainly below what is ordinarily considered statistically significant. Sorry. So, where did this idea of vaccines come from? तो शब्द जो है वैक्सीन, तो वो लैटिन से है, वैका का मतलब है गाय. तो what cows were discovered to have as cowpox, that infection was thought of as being relatively harmless to humans and yet protect against a much more serious, much larger disease. चेचक के खिलाफ प्रतिरक्षा का निर्माण करता था काउपॉक्स, तो उसलिए उसे वैक्सीनेशन कहा गया. लेकिन इसमें एक खामी है. एंड द कैच इज, हाउ डिड एनी ऑफ अस कम टू नो अबाउट दिस आइडिया that doing something that is a little bit harmful but not very harmful will allow for protection in the future against a serious, even lethal disease. This is knowledge about how the world works. ये कार्य कारण भाव का मसला है. This is knowledge of cause and effect relationships that allows you to predict the future, that allows you to say, if we do this, then this and this will happen. So how did we come to know this?
who came to know this. And the common story is that before there was vaccination using cowpox, there was variolation using very small doses of smallpox itself. In other words, तनिक सीमित मात्रा में अगर चेचक पैदा करो किसी मनुष्य में, तो बहुत फोड़े नहीं होंगे, जान नहीं जाएगी, विद्रूपता नहीं आएगी, और फिर भी आगे चल के बड़ी गंभीर रूप से चेचक होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी. एंड दिस इज द आइडिया ऑफ प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन, which is what was used for the vaccine, has been used for the vaccines ever since. So let us think about this idea. And the common story is that sometime in the 18th century, an English woman in Istanbul, in Constantinople, saw that this kind of giving small dose of smallpox to prevent serious smallpox in the future, called variolation, because smallpox is variola in Latin, तो ये जो variolation की तकनीक थी, this is a technology, ये जो variolation की तकनीक थी, ये आम पैमाने पर इस्तेमाल होती थी तुर्कस्तान में. So Lady Mary Montagu is supposed to have gotten herself, her children variolated and taken it back to Britain, where it became something of a fashion, and Edward Jenner, who is credited as having discovered vaccination, started his life as a variolator, because that's what physicians used to do. चाव की बात ये है कि ये तकनीक आई कहाँ से? क्या पश्चिमी एशिया में बनी? Was it created? Was it identified? Was it discovered as evidence-based scientific technological knowledge? Because there is both technology and science in it. I'm causing trouble for my friend Prabir Purkasta's thesis, but even so, इसमें विज्ञान भी है और तकनीक भी है, प्रौद्योगिकी भी है. आई कहाँ से? तो अनेक किस्म के अंदाजे लगाए गए हैं. All sorts of guesses have been made, and the straightforward guess that Joseph Needham in his writings about science in China came up with was that the oldest written record for it was in China, which is true. But here's the catch, and this is why I want you to see how we think about evidence and the guesses we make about how things work. So how do those of you who are my age, anybody who's more than 50 years old in the audience will remember being vaccinated. Nobody who's younger than that has been vaccinated, so against smallpox. So all of us have scars on the arm, those of a certain age and above. And those are smallpox scars. But they are not by smallpox virus, they are cowpox virus. But they are scars. So what was done? वायरस को ले लिया, थोड़ा विषाणुओं को ले लिया, एक सुई पे या छुरी पे डाला और चमड़ी में थोड़े जख्म किए और जिनमें उनको मसल दिया. So what you have done is given the infection in the skin. This is what variolation was also done when it was practiced in Turkey and in Europe and so on and so forth. The interesting thing is China did not do this. So the Chinese, if we were showing slides, that's the one picture I would show using a slide, because the Chinese variolation is an extraordinary technology. The Chinese variolation is to take some of the powder of the smallpox scab, grind it up, put it in a 3-foot long tube at the end, put it up the nose of the person who is being variolated, and then jaan hatheli par lekar
जो वेरियोलेशन करने वाला था, करने वाली थी, वो आपके नाक में एक, दे यूज्ड टू डिलीवर इट एज अ पफ. सो वैक्सीनेशन, वेरियोलेशन वाज इनसाइड द नोज. अब सवाल ये है कि ये जो तकनीक है जो नाक के अंदर वेरियोलेशन करवाती थी, उसकी चमड़े वाली वेरियोलेशन कैसे हो गई? बिकॉज एज मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन द डायस नो, टेक्नोलॉजीज हैव अ होल डिफरेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ बीइंग डेवलप्ड एंड देयर कंपोनेंट्स are not so easily changed and altered as this implies. So here's the interesting thing. We are in Calcutta. कलकत्ते में बैठे हैं. बंगाल में 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास से पक्का मालूम है कि गांव-गांव टीकादार घुमा करते थे. और ये टीकादार क्या करते थे? टीकादार चेचक की जो पाउडर कहिएगा, जो स्कैब्स निकलते हैं स्मॉल पॉक्स के, उनकी पाउडर बना के वो लेके घूमते थे. और जहां उन्हें इजाजत मिलती थी पैसों के लिए, वहां वो चमड़े पे जख्म करके उसमें उस पाउडर को मसलते थे. This process of scarifying, of causing a skin break into which you rub the vaccine, the immunizing agent, was done in India, in South Asia, a very long time ago, completely independently from the technology that was just across the Himalayan barrier. So the question becomes, who invented the technology and who understood the science behind the technology, the idea of protection behind the technology well enough to say that the technology is likely to work, and who then actually came up with the technology, is likely to have multiple answers. There was one development in China, there was obviously one development in India, in South Asia. There were similar developments where placement, so in India the placement used to be on the arm below the elbow. There were other places where the placement was on the wrist, in Africa, on other parts of the body in West Asia. In all of this, two things come up. Number one, this is an Indian knowledge system achievement. It was done here. It was discovered, used, and practiced here. Why we did not go forward with it is a whole different question. But clearly it was used and practiced here. But there is another point to it which I want to end with, which is, it was not just us alone who did this. In the ordinary world of everyday life, where we look at evidence, we try to infer cause and effect relationships, and we try to make predictions for the future that will hopefully make life better for not just one person but for everybody, there are no credit profits to be made. There is an inclusive community life to be lived better and better. And following that, exactly like agriculture, here is another example of a technology that was clearly discovered, conceptualized, invented, and used independently by multiple human communities across the world. All of these communities deserve the respect of their peers as a common shared human knowledge system. अगर अगले 4 दिनों में हमने किसी चीज को लेकर हमारी बहस का रुख केंद्रित करना है, तो मैं कहूंगा कि इस मुद्दे पे है कि किस तरीके से हम विज्ञान की, प्रौद्योगिकी की जो
प्रोग्रेस है, जो विकास है उसके बारे में अपन सोचें, औरों से बात करके उनसे सीखें, उन्हें सिखाएं, और जो उसमें से नतीजे निकले वो सबको उनका फायदा मिले, सब तक वो पहुंचे, सिर्फ बतौर टेक्नोलॉजीज नहीं, उसका जो विज्ञान है, उसकी जो मीमांसा है, उसकी जो चिकित्सा है, वो भी आम लोगों तक पहुंचे, बिकॉज इट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क that provides the ultimate empowerment, particularly for exploited and underprivileged groups and communities. It is this that we of the All India People's Science Network, in this, the All India People's Science Congress, the 18th of its name, should consider to be a true vision of an Indian knowledge system. I will stop with this. Thank you very much. Thanks to Professor Satyajit Rath. This time, 18th All India People's Science Congress is being held in Kolkata in collaboration with West Bengal University of Animal and Fishery Sciences. Last time, 17th All India People's Science Congress was held in Bhopal. Now, we will see a video film, short film, a journey from Bhopal to Kolkata. So, I request the media group to start now. Only thing is that our dignitaries to be switched up and light should be switched off. That light. এই লাইটটাকে অফ করবে? লাইট অফ লাইট লাইট, এই লাইটটা অফ করতে হবে। सौरभ सौरभ लाइट ऑफ आप देख सकते हैं हाँ बैठे तो ব্যাস 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 ঠিক আছে। चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के रे चोला माटी के हो चोला माटी के राम एकर का भरोसा
अरे शिक्षा की बात करो, शिक्षा की बात, शिक्षा की बात करो, शिक्षा की बात, आज ये जरूरी है भाई रे। अरे शिक्षा की बात करो, शिक्षा की बात, आज ये जरूरी है भाई रे। अरे ज्ञान की सोच में, ज्ञान की जोत है, ज्ञान की सोच में, ज्ञान की साथियों कहो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए तालीम है जरूरी। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। अरे जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सियां बेमार संसद मोर है। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है। ओ देखो लोगों देखो बहने आती है, ओ देखो लोगों देखो बहने आती है। आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। तारीकी को तोड़ेंगी वो खामोशी को तोड़ेंगी, तारीकी को तोड़ेंगी वो खामोशी को तोड़ेंगी। हाँ मेरी बहनें अब खामोशी को। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो लहूलुहान पाँव लेके भी चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरत है। चलो कि खत्म हो न जाए जिंदगी की हसरतें। चले चलो, चले चलो, चले चलो। ये जा रही है जिंदगी कहाँ बिना यकीन के, ये टुकड़े टुकड़े कर रहा है कौन इस जमीन के। कौन इस जमीन के, कौन इस जमीन के। सुकून लेके जा रहा है आज कौन छीन के, गला दबा रहे हैं ये हैं हाथ किस मशीन के। हाथ किस मशीन के, हाथ किस मशीन के। सरों पे जो बची है छाव लेके भी चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो लहूलुहान पाँव लेके भी चले चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो। तबाहियों की छूट हो, तबाहियों की छूट हो। वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर सड़कों को बिछाया मैंने, रेलों को चलाया रे। सड़कों को बिछाया मैंने, रेलों को चलाया रे। अरे हवा में उड़ाया रे, चंदा से मिलवाया रे। हवा में उड़ाया रे, चंदा से मिलवाया रे। एकता समानता शांति के लिए
शांति के लिए, मानवता के लिए, सद्भाव के लिए। साथ जुड़ो मिलके चलो रे। साथ जुड़ो मिलके चलो रे। मिलके चलो रे। पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया। पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया। पूरे का पूरा देश ही बाजार बन गया। पूरे का पूरा देश ही बाजार बन गया। सहमा सा चुप खड़ा है वहाँ दूर आदमी। सहमा और अभी काली होगी ये आने वाली रात, शुरू हो गई है अब उल्टी गिनती की शुरुआत। और अभी काली होगी ये आने वाली रात, शुरू हो गई है अब उल्टी गिनती की शुरुआत। नदी गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए। आ गए यहाँ जमा करम मंजिलों को ढूंढते हुए। Greetings to all fellow workers of the All India People Science Network in the cause of scientific temper, rationality, justice, equity, and inclusive, sustainable progress for all peoples. We last met in our National All India People Science Congress over 2 years ago in Bhopal in June 2022. In Kolkata later this month, we will meet again and take stock of the events that have influenced the landscape in which we, of the constituent organizations of the AIPSC, work. The ongoing efforts of right-wing forces to reshape India's polity and discourse in majoritarian, xenophobic, anti-rational and anti-scientific ways have continued apace. At the 2024 Congress in Kolkata, we will discuss these, strategize and coordinate our steady grassroots responses and work against these tendencies that are so destructive for India's secular syncretic cultures and for the scientific temper of its people. It will be a gathering of conversation, song, music and solidarity. Please come and participate. लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए। We are the People Science Organization. Science and technology for people and development of scientific temper in the mindset of people. Now, I will request Mr. Probir Purakastu, founder of NewsClick, to say something at the inaugural session of 18th AIPSC.
I see that I have been converted completely to NewsClick now. I thought I had a different identity, but I think thanks to the government now and the cases that have been launched against me because of running of NewsClick, I now have become the only identity of NewsClick. I'll start with my NewsClick identity then and start by talking about, is there any reason that the audience should be all dark and the light should be behind like that? So, can we have some technology of light switches being turned on? लगता है कि नाटक कर रहे हैं हम तो ऑडियंस डार्क है सिनेमा हॉल जो होता है नाटक जो होता है आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते थे कि मैं क्योंकि मेरी अब NewsClick आइडेंटिटी काफ़ी मजबूत हो चुका है सरकार के वजह से ख़ास तौर से तो मैं उसी से शुरू करता हूँ कि आज मीडिया की भूमिका दुनिया में क्या है और हमारी भूमिका उस मीडिया के साथ क्या कैसे है क्या रिश्ता है और हम इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं तो मैं इतिहास से शुरू करना चाहता हूँ और सत्यजीत की तरह पुराना इतिहास में जाना चाहूँगा I'd like to go back to history and I would also like to look at technology in terms of what communication is. Because if you see mass communication, if you can tell people not to compete with me, they don't need a mic. So I was basically going to place before you that communication is a very old discipline. It was originally for whom? There are two kinds of communication. दो तरह की communication होती थी जिसको हम mass communication कह सकते कि we are equation or communication with a large number of people. One of the kings, of course. The kings always decided that their name, what they thought, what they said was important. Some of that were really important. We had what I call Hammurabi's edicts. They said what the state owed to the people and what the people owed to the state and each other. Yes, important. Everybody needs to know. The second part of it, of course, how great they are. That you have Ashoka's edicts. He, of course, also talks of various things. He also repents what he did in Orissa, where he massacred a large number of people, after which he really repented, it appears. But his repentance is not there in the edicts in Orissa. It's there in Afghanistan, Kashmir. That's where he repented. But it is also clear that he was also talking about the right path, what is to be done, of course, with his name on the edicts. But along with it, there is also a different kind of communication that is going on, which is also, in my terms, mass communication, which is the bards. The bardic, जो लोग गाना गाते थे, कविता बोलते थे, लोगों के सामने पाठ करते थे, वो हो सकता रामायण हो, भगवान की बात हो, ये तो आम लोगों को मनोरंजन के लिए जो करते थे, for entertaining people, these were the people who were also mass communicators. Quite often in the service of the king, in the service of the powerful, but also their connection was direct to the people. And it's also interesting that people were illiterate, so were most of them. If you take Homer, the blind poet, he was supposed to be illiterate. But most of the things they talked about, they composed, are there in oral tradition, oral form, and it changes continuously. Each time he recites, it changes.
So it was fluid in that form, it was not written. But at a certain point of time, less in India than other places, we seem to have aversion to mass literacy from very early. Became the preserve of the Brahmins, others could not. Similarly, for as you know, archery, the Shudras could not fight, and if they learned, they had to surrender their thumb. So all that is a part of our history. But the point again is that mass communication was really also there, but in oral form. It takes written form much later. But what brings that change is, of course, the ability to write, communicate, and that communication takes place in different forms. In India, we got the additional problem of who can write, who can't. Our common understanding is Brahmins wrote, others did not, which is not true, because the other community which had to know writing was, of course, the Baniyas, the traders. They, of course, wrote, and that's why the Bhakshali manuscript is actually a trader's manuscript where you get mathematics, arithmetic, zero, all this discussion which comes, because they are the only others who are a literate community. I'm not going to go into this history in very great detail. All I'm saying is mass communication is something that has existed both in terms of expanding the power of the ruled, but also in terms of seeking consent from the ruled by proclaiming how great the ruler is, by promulgating laws, and also embedding all of these in stories about the past, stories which were bardic literature, which then of course connects the king ruling now to the great Chandravamshi or Suryavamshi, who is then of course Ramayana, Mahabharata tales. So this is, as I said, not something specific to India. The only more literary literature that we can find is perhaps when there were papyrus-based writings, and we find large number of papyrus-based writings coming now as digs go on from essentially rubbish dumps. And we got the Buziri's manuscript which tells us trade between Rome and India, but also lost Greek literature, Latin literature is also found in those rubbish dumps because they were in papyrus, they were written. Now, the only problem with that is papyrus is Egypt. It's not available in large parts of the world. We wrote in different bases. We wrote on bark, we wrote on palm leaves, and depending at our script changes, you have cursive script, more curly script if you're writing on palm leaves, and if you're writing on bark, you can make straight lines. So all of that technology of writing is closely interspersed with also what the content is and what it is written on. But the great transformation that takes place is finally, of course, the ability to create paper and to create printing press. Both essentially came from China. China is the one which starts paper. They hoarded it. They didn't want to let go of the technology. The Arabs had it and they spread it much more. Comes to India as well. But also, and this is the other part, China, because writing, duplication was a problem, number of letters were very large, block printing also comes quite early in China. The Diamond Sutras were actually block printed long back, and it's only much later then you get the printing press which expands printing to an extent that it is possible then to democratize buying of books. It will be surprising. Buying of books, just consider the price of a book if it is entirely handwritten. If you are copying, and mostly in Europe it was parchment, which was the basis which was being used, parchment is expensive. So the scribes who could copy were not many. And you wouldn't give a parchment to a person who doesn't write well. You would give it to only somebody who writes well. And therefore, it's said that the number of books, for instance, in the major abbey in England, Reading Abbey, the number of books that were printed in 100 years
is something which were many more times than that could be done when the printing press comes into existence. So the whole expansion of writing, mass communication, is intimately connected with the technology of writing, which is in this case printing, and then the acceleration that you get from printing press. I can't think if there is so much talking there. कोशिश करेंगे. So, अच्छा, okay, I'll fight it out with the noise. तो ये जो आम लोगों में जो पहली बार लिखना पढ़ना पहुंचता है कागज के साथ और प्रिंटिंग के प्रेस के साथ होता है. इसके पहले आम लोग सुन सकते थे, कुछ लोग बोल सकते थे, पर इतिहास हो, हमारे पुराने किताबें हो, महाभारत हो, रामायण हो, जितने और भी चीज़ें हो, उनको बोलने के लिए जो लोगों की पढ़ना लिखने की आदत होनी चाहिए था, चंद लोगों में ही मौजूद था. Very few people had that ability to learn to read and write. India was of course much more constrained by the caste system. Mass literacy was not going to be there given the caste system, and therefore this whole, in that sense, liberation of all people who then can read and write in much greater numbers, because now you have paper and you have the printing press. And this creates, this is about 17th, 16th, 17th century, you start liberating the written word in much greater numbers, because now we're printing books and duplicating them in a mass scale, you get mass literacy. But it takes 200 years more for something called mass media to arise. And that is, of course, the newspapers. It's only 19th century, mid-19th century, you start getting newspapers. The question then becomes what we are facing today. How do you pay for it? Who's going to pay for news? And then the solution was either you make the paper very high priced, few people pay, masses can no longer read it, or fund it through advertisement, and advertisers then become the economy of the newspapers. And this is the key issue. It's not that it is television today or social media today that money is playing a part. Entire news industry that came out, particularly newspaper industry, came essentially from advertisements. Both in UK and in United States, the fundamental oil of running the machinery of the press was money, and that came from advertisers. So, as one of the television channels said, ठीक है, न्यूज़ तो आप लोग देते हो, पर पैसा तो वो देते हैं ना, तो उनकी तो चीज़ रखनी पड़ेगी ना, उनकी तो बात रखनी पड़ेगी. So who do we listen to? As a television owner or a newspaper owner, we listen to those who give advertisements. And I still remember that one of the newsrooms where one of my friends was there, or his son or daughter was there, they were told, don't give depressing news. If you give depressing news, people won't buy. You have to give them optimistic news, good news. And that is why in Maharashtra, the entire Maharashtra had only one correspondent covering agriculture, agriculturists, peasantry, and that was P. Sainath. How many newspaper reporters were there for what is called the fashion beat? The fashion beat had 40 reporters in Bombay, one reporter for entire Maharashtra. So this is the ratio of what news they want and what news they have to carry, because that's what people do want to read, what's happening in the country, what's happening to us. Now, this is again no different from television.
Television is entirely depends on advertisements. Of course, as we know, cricket, most, shall we say, sought after sport for advertisements, football also. So these then determine the economics of the newspapers and television industry. And this is why, though it is important that there should be press freedom, so we get news, and we do get news of what different political formations are saying, what the movements are saying, but the newspaper industry, the television industry is really not interested in that. They're interested in what will sell more goods, therefore depressing goods is not something they want to carry. If you have a strike in the city, शहर में अगर कुछ जुलूस निकलती है, ये तो स्ट्राइक होता है वर्कर्स की, तब लोगों को अगले दिन अखबार में ये पढ़ने को मिलेगा, they will get this in next day's paper, that there is a traffic jam caused by workers who came and blocked the roads. तो वर्कर्स ने क्यों स्ट्राइक किया, क्यों सड़क पे निकले, उसकी चर्चा नहीं होगी. चर्चा ये होगी गाड़ी जाने वाले लोगों को, गाड़ी में जो रहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गई, because traffic jams took place. So this is essentially the way news is framed. And of course, the only reason news still had some sanctity, because the journalists were unionized. Once upon a time, the journalists in India are unionized, they fought for their rights, and they in fact also helped to create a certain democratic space in the industry. Unfortunately, those unions have ended, more or less weakened. They're still there, they still fight. In fact, Delhi, it's a press club and the journalist unions who fought for NewsClick when it was the way the attack took place. I'm not going to go into that, but it was really press clubs in different places, the journalist organizations, different places, who took it up and said, this is our cause as well. So yes, there is still fight going on in the organizations. Organized trade unions exist, however weak they have become, and the battle for truth goes on. The battle also goes on, what are our rights? And here the fundamental issue, जो बुनियादी चीज है, जो प्रेस फ्रीडम की राइट हम कहते हैं, खैरत में, चैरिटी में नहीं मिला. This came out of the freedom struggle. The kind of rules that the British had imposed on the newspapers is the reason why in the Indian constitution freedom of speech exists, and what the press enjoyed came really from that. So why is it that we are under attack? We are under attack, of course, clearly, because there is a set of people who did not like the direction India took after independence. If you remember, Ambedkar की constitution, Nehru की constitution पे इतनी गालियाँ पड़ी थी, kind of abusive language, the RSS newspaper at the time, or the paper at the time, organizer printed, kind of cartoons they printed about Ambedkar, said clearly that our constitution should have been based on Manusmriti, not on what is the Europe, England, France, America's constitution. Any problem that you are facing? नहीं पानी चाहिए. अच्छा, okay. My throat, but that is old age. है ना, सूख गया है. हो गया? ऐसा कहना है आपका? So if you look at it, that the kind of attack the Indian constitution had right at that point of time when it was being made was that this is not Indian, and Ambedkar, Nehru are basically importing foreign ideas. उनका था कि हमारे जो मनुस्मृति है उसी के आधार पे
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए मतलब एक कास्ट बेस्ड exclusionary constitution should be made, not a democratic constitution. So therefore, this battle that today that we get is being fought, though Ambedkar is still now being talked about, oh, you know, we love Ambedkar. The reality is they opposed Ambedkar when he was alive. They opposed his ideas for a very long time. It is only now they have decided that without Ambedkar, that this battle they cannot win. Upper castes by themselves are not going to be a majority. They need other sections. So suddenly discovering Ambedkar with thinking that India can be fooled again and again, people will forget what their position has been. But I come to the issue that is what I was supposed to speak on. I think I wandered all over. But the basic issue that I'm raising now is that what do we do in the face of the kind of onslaught we have? And I will end with certain elements of hope. Yes, the media today is in the hands of big capital. Big capital is going to compromise with whoever runs the country, and whoever runs the country, they will ensure that big capital is going to be with them. And if big capital is with them, then of course the news organizations also will follow suit, because at the end of it, it is their advertisements or their direct ownership that determines what is the policy, editorial policy. But the problem they have is they still need readers, and the readers still have to be fed news. उनको न्यूज़ देना ज़रूरी है, नहीं तो न्यूज़पेपर चल नहीं सकता. तो इसीलिए देना तो पड़ेगा. और जो हमारी संघर्ष आज़ादी की थी, उसकी जो देन है, we still have rights embodied in the Constitution. And those constitutional rights, of course, are a matter of adjudication in the courts, but they're also a matter over which people are fighting. And when people fight, it also influences the courts. So ये जो लड़ाई है, ये हमारी और आपकी लड़ाई यही है कि कैसे जनता इन चीज़ों को देखे और इसके लिए क्या प्रभाव कोर्ट्स पे, अखबारों पे डाल सकते हैं कि ये बातें भी आए. और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत है, जो जर्नलिस्ट की बहुत सारे चीज़ें उसमें आती है, तो उन चीज़ों को लेकर भी हमारी लड़ाई रहती है. बट टुडे आई थिंक वी आर ऑल्सो फेसिंग अ completely new scenario. The new scenario is the digital platforms, and it is also true that advertisements today are not coming to newspapers. Television, yes, some amount, but the biggest amount of advertisements go to Google and Facebook. 50% of the advertisements in the world, जो फंडिंग मीडिया की होती है, आज वो गूगल और फेसबुक के पास जाती है. वो अखबारों में नहीं जाती है, कुछ जाती है कम, और टेलीविज़न के पास जाती है कुछ कम. सबसे ज़्यादा जाती है गूगल, फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, and it is mostly Google and Facebook. So what is the challenge we have, of course, is Google and Facebook also are directly involved in the process of how news is conveyed. At the same time, the point that Google and Facebook have is they are controlled much more by what happens in the US, what happens in Europe, less by what happens in India. Yes, compromises they will make, but their main political influence is not India, but really United States, number one, number two, Western Europe. The issue that we have is that technology today, which is what also allows them to get advertisement, is what is it that people say to each other. And there are 600 to 700 million subscribers, telephone subscribers, who use telephones, cell phones for communication. So huge ecosystem has today built up.
where people of all kinds, हर तरह के लोग उस मीडियम पे आते हैं, अपनी बातें आपस में करते हैं, और उसको कोई रोकना चाहे आसान नहीं है। उसमें यह भी है कि जो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, उसमें ऐसे हमारे मित्र रवीश हैं, अभिसार शर्मा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो चैनल्स चलाते हैं, तो वो बात अलग हट के कर रहे हैं इसीलिए कि उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं देने वाला कोई खास। तो उनका है कि जब तक वो लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे तब तक उनकी अहमियत नहीं रहेगी। सो दिस whole space that is opened out with 600-700 million cell phone users has created a new medium and a new space for all people. And the problem the government has, they can control television, they control the newspapers because they are centralized. Decentralized platforms को control कैसे करें, इसीलिए broadcasting bill लाया, which says every influencer also has to register. 600 million people, maybe 2, 3, 4 million people are running their own channels. Can all broadcasting जो हमारे regulate करना चाहते हैं, do they think they have the ability to regulate 2, 3 million people? So the problem they have is we have now reached an age where the cell phone as an instrument of communication has opened two-way communication, unlike the centralized communication that used to take place earlier. तो आज के तारीख पे जनता भी अपनी बात कह पा रही है और उनकी बात बहुतों तक पहुंचने की क्षमता है. So this where the means of communication is really still centralized, but it's Google and Facebook. It's not a television station, not a platform which you can tell the owner, ring up the owner and say, if you don't do it, I'm going to send ED after you. So this is the change that we see, and this distribution of communication medium at a scale which is much, much more difficult to control is, I think, the problem that the rulers have today. But it doesn't mean that the war for democracy is won. It is not, because there are as many people there trying to spread hatred, trying to divide the people, as they are trying to create a new India, which is going to fight for the rights of the people and the rights of the people to live a decent existence. तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में दो पक्ष है, पर मेरा मानना ये है कि आप कम अरसे में, थोड़े दिन के लिए आप हेट्रेड को जिता सकते हो, थोड़े दिन के लिए राइट कर सकते हो, पर लंबे अरसे में कोई समाज हिंसा, हेट्रेड, इसके आधार पे अब समाज बना नहीं सकते. तो इसीलिए तोड़ सकते हो, बना नहीं सकते, और यही हम देख रहे हैं. और उसको बहुत दिन तक इंसान जो है वो उस तरह बर्दाश्त नहीं करता. हो सकता है चंद दिनों में राइट्स जब होते हैं आ जाते हैं उस पर गिरफ्त में लोग, बट याद रखिएगा सन 47-48 की उन राइट्स के बाद भी भारतवर्ष में बीजेपी आगे नहीं आ पाई, बहुत दिन तक एकदम पीछे थी. क्यों? क्योंकि आज़ादी के संघर्ष में वो गायब थे ही नहीं. तो इसीलिए आज भी ये सोचे कि लोग वो भूल गए, नहीं भूले हैं. हाँ, अब भेदभाव करके, पाकिस्तान करके, मुसलमान करके, क्रिश्चियन करके, अब भेदभाव पैदा करके कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए अब दूसरे रास्ते पे ले जा सकते हो. सही है, हमारा काम इस वक्त कठिन है. आप अमीरों को बहुत और अमीर बनाने की कोशिश कर सकते हो, कह सकते हो. हम देखिए क्या कहते हैं, द रिच विल लिफ्ट अप द पुअर. कहीं देखा है आपने? रिच पुअर को लिफ्ट अप करता है, रिच तो अपने आप को रिचर बनाता है. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू इट फॉर सम टाइम, you can fool the people for some time, but I do not believe hatred can conquer India. It never will. It cannot conquer any nation, for not for long time. For some time, yes.
एंड देयरफॉर आई बिलीव कि हमारी संघर्ष जब तक हम सच्चाई पे रखेंगे, जनता जो दबे हुए लोगों के साथ रहेंगे, उनकी बात करेंगे और हमारे जो हथियार है हंसने की, ये भी बरकरार रखें, हमारे जो लीडर्स हैं उन पर हंसने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे उनकी जो भयानक चेहरा लोगों को लगता है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा. तो आई डू बिलीव दैट वी हैव नॉट ओनली we have to struggle for the people and their rights, but we have also to use one thing that we do have. We have the ability to create. सृजनशीलता हमारे पास है, क्रिएटिव एनर्जी हमेशा हमारे साथ रहे हैं, कलम हमारे पास है जो लिख सकता है, हम अभिनय हमारे साथ है जो बोल सकता है. तो ये चीज़ देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ इस दहशत और तानाशाही बहुत दिन कोई चला सकता. इतना बड़ा देश में और जिसमें इतने सारे लोग हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग रुचि के लोग हैं, इस विविधता के अंदर ये एक ऐसे यूनिटरी समझ लोगों पे देश में थोप देंगे, ये मैं नहीं मानता. हो सकता है कुछ लोगों को इसमें कुर्बानी देना पड़े, दैट इज ऑल राइट, दैट्स अ प्राइस वी आर विलिंग टू पे, but you cannot stop the people of this country from the creative energies they have and for struggle which they have always fought. And I think therefore I'll end with this, not on NewsClick, but what struggles of media today means all struggles of all of us who use the cell phone also for communication, also for receiving what we want, but also for communication. So this two-way instrument that we have, how do you enlarge it, of which NewsClick was a small attempt. I think that is what we have to learn. How do we use these instruments of communication today for the purpose of struggle and the purpose of resistance? Thank you very much. Thank you, Prabhupada. Now we will release a book. You know, in the month of February this year, in Kolkata, we took the resolution on scientific temper. That scientific temper resolution and declaration is printed in the form of book and in two languages, in English and Bengali, English and Hindi. That will be released. Now, I request our General Secretary and our President to hand over the books to the guests and they will release the book. Yes, Madam, you hand over please the books to the guest. Okay. Thank you all. Now I request Professor Parthopratim Majumdar, eminent scientist and ex-professor of Indian Statistical Institute, Kolkata, to say something on this occasion. Professor Satyajit Rath, All India President, Professor Shubhimal Sen, President of the Organizing Committee of the Science Congress, delegates, good afternoon. The topic that I had chosen this afternoon to speak to all of you is the art and science of communicating science.
Day before yesterday, Pradeep Babu sent me the theme note of this particular Science Congress. After I read that, I said, I'm going to speak about something completely different. So please bear with me, because I'm not going to speak about what I thought I would speak, and that's what has been publicized to you. I'm not going to speak on that. Also, in addition to this note that I got from Pradeep Babu, I also remembered a speech, a very short speech of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, that was delivered on 26th September 2024, 26th September of this year, where he made some very pious wishes. What I wish to do is to look at those wishes against the backdrop of what's happening in science today, especially those of us who continue to practice science, the kind of problems that we are facing, and where do we go from here. Not very sure where we go from here, but we also collectively have to voice our, not necessarily protest, but our anxiety that we are not able to do the kind of science that we would like to. So let me start with what Mr. Narendra Modi had said. He said, serving humanity through research should be the goal of scientists in India. Fair enough. We all agree with that. There is not one single person who is assembled here who will not agree with Mr. Narendra Modi. So serving humanity through their research should be the goal of scientists in India. And he says that this is our responsibility, collective responsibility, such that humanity is served. Science for self-reliance has become our mantra today, and self-reliance is one of the key words in today's Science Congress, has become our mantra today. Sure, I mean, we want to become self-reliant, and for this, Mr. Modi said, we have started some historical initiatives: Digital India, Startup India, Make in India. And I really don't have very much knowledge about Digital India and Startup India, but I do believe that Making India is a good endeavor, but the way that it is being practiced is hurting science. And I wish to tell you one single instance of that. The other thing that he said is that in the future generations of India, scientific temper must be hardened, solidified or hardened. Agreed? It's enshrined in our constitution. Scientific temper is enshrined in our constitution. It's really an attitude of logical and rational thinking. Are we progressing in a logical and rationally thoughtful way? My contention is that after the BJP government has come in, there are lots of things that are happening here that are neither rational nor logical, and I'll give you a few examples of that. We believe in scientific temper, and our constitution, of course, upholds scientific temper as one of our fundamental duties. This Congress also talks about democracy, and there is a deep relationship between scientific temper and democracy through the idea of secularism. And secularism is gone for a toss almost in India, and that's very, very unfortunate. So on the one hand, our Prime Minister upholds scientific temper. On the other hand, secularism is hardly practiced anymore, or it's on a decline. The practice of secularism is on a decline in our country, which is really very sad. So how would we be able to, uphold scientific temper when we are actually compromising on secularism, and democracy is absolutely, the secularism is absolutely essential to the practice of democracy as well. And secularism is another celebrated facet of our constitution. The practice of secularism derives strength and support from ideas of science. While science can best motivate, could we have a little bit silence here? Otherwise it becomes very distracting, yeah? Sorry about this. While science can best motivate change in society that appreciates secularism. So while we want to serve humanity, we need to change society, and that has to be done by appreciation of secularism, and that appreciation is on a decline, unfortunately, in our country.
The role of scientific temper cannot be overemphasized in a tradition-bound society like India, where dogma and superstitions rule the roost. Now, dogma and superstition rules the roost, but it is our duty as scientists to actually get rid of those superstitious beliefs such that they don't occupy the center stage, such that logical and rational thinking occupies the central stage. Unfortunately, with the coming in of the BJP government in 2014, Mr. Narendra Modi himself said a few things, and it's all of you know this. I'm going to state a few facts, state a few comments that they had made. All of us know this, but it is useful to sometimes remember these, sometimes such that it resonates in our minds, and we would then like to fight against those. One of the things that he said is that he cited the examples of Ganesha, and you remember that, and he said that this is the science of plastic surgery and genetics, which was practiced in India, and Ganesha is the emblem of it all, which we know is absolutely not scientific. On the one hand, he's talking about scientific temper. On the other hand, he's talking about plastic surgery and genetics through Ganesha. The Biplab Deb, who was Tripura's state chief minister, he remarked that internet and satellites existed in India. As a rational human being, as somebody who is in India, somebody who follows what goes on in India, somebody who knows a little bit about history, even mythology, I don't think that we would ever agree with the statement that Mr. Biplab Deb made. Our president referred to the National Education Policy 2020. There have been multiple curriculum changes, and there is an intent to rewrite history in the sense that we are hearing more and more, almost everything, almost all knowledge, almost all facets of science came out of India, including the fact that we as modern humans, there is plenty of evidence to say that we evolved in Africa. There is a whole group of people in India right now who are saying that humankind arose in India and went out of India to populate other parts of the world. I have spent a very large portion of my time researching on human evolution, looking at the structure of populations in India using tools of genetics, and we do not have any evidence to show that humankind arose in India and went out of India to populate other parts of the world. What the evidence that we do have is that humankind arose in Africa, came out of Africa to populate other parts of the world, and one of the first places they came to was India. And of course, from India they went out to other places as well. But there is no evidence to show that humankind arose in India and went out of India. Again, this is all a figment of our imagination, stimulated by the current government, unfortunately. And our respected Prime Minister, who is upholding his scientific temper, himself is fomenting these kinds of thoughts, which is very unfortunate. We need to, even if we do not speak up, we actually need to, in our own minds, need to resist the temptation to fall in line. So essentially, that's what minimally that we can do. Again, there are now various kinds of courses that are happening, and Satyajit mentioned about the Indian knowledge system. And under the Indian knowledge system, very strange kinds of courses are coming up. For example, IIT Mandi is sort of spearheading the bandwagon. IIT Mandi has started an research-based MS and PhD course on music and musopathy. So essentially, you listen to music and all your diseases will be, cured. Students with music degrees from traditional institutes, not necessarily formal universities, are also eligible for this course. Indian Knowledge System and Mental Health Applications Center has come up in IIT Mandi, and one of the course modules in that particular course has the concept of reincarnation. That's a part of this course. So essentially what they're talking about in the knowledge system and mental health applications is reincarnation. Now, reincarnation is something that's neither rational nor logical nor scientific, and therefore in a course in science,
knowledge systems and mental health applications. They're talking about reincarnation, body and out-of-body experience, death and out-of-body experiences, and so on. And who is teaching this course? The director himself, the director of IIT Mandi himself. Just look at where our institutions are going. Today, vice chancellors, directors of universities are actually being planted, and unless you are aligned to these kinds of thoughts, you will not be selected as a director or a vice chancellor. Look at what has happened to IIT Kharagpur. In a few days, if it's not come out yet, in a few days, many of us will get a calendar. Either a soft copy or a hard copy of a calendar. It's coming out for the last several years, and all kinds of nonsense are said there. Well, nonsense according to me, because I believe in scientific temper, I believe in logical and rational thinking, but in that, all these kinds of Indian knowledge systems calendar will come out, 12 pages, and you will get fed with all kinds of, these historical things that are neither scientific nor true. Vegetarianism has been blamed, or non-vegetarianism was blamed for the landslides that we saw in the Himalayas. You eat non-vegetarian food and the outcome is that you end up with landslides in the Himalayas. These are the kinds of systems that are being taught under the Indian knowledge systems, the new education policy 2020, and so on and so forth. What is happening to our budget? And I said that I'll talk a little bit about Make in India. Of course, today, those of us who do science and use sophisticated instrumentation, most of the instruments are actually imported. And the manufacturers of those equipment, reap heavy profits. It will be a very good idea if those instruments are made in India, and we all should support that. However, the change from imports to Make in India was done very abruptly, and it was done so abruptly that if we want to buy an instrument for our experiments today, we are not allowed to buy because it's not made in India, and we have to go through a huge amount of paperwork, pay a fat import duty to be able to get that equipment. It should have been done, the transition should have been done in a smooth way, in a slow, in a paced out way, and the industries should have been encouraged to make these instruments. But without all of that, suddenly this has been imposed on us and we are unable to do these experiments. And believe it or not, the equipment manufacturers will also supply us reagents to run those machines, and if we don't buy the reagents from them, the annual maintenance contract on the equipment would not be given to us. So there are catches to all of this. So right now, as a result of the Make in India policy, which I completely support, however, it has to be paced out, and because it's not paced out, science is suffering. I also, feel my life in science is coming to an end. But, many of my students who are right now budding scientists in the country, they are suffering. The other thing that's happening is that science if I define my own science, if I write a grant proposal to the government saying that this is what I want to do, it used to go to some peers, other scientists, eminent scientists who would evaluate that and agree or disagree with you. If they agreed with you, then they would tell the government to provide funds for doing that kind of research. Today, we can't define our own research. Most of the research is being defined by a small number of individuals in the name of missions, and independent research thought out by the scientists themselves are not being funded as much they should be, or as much they used to be. This is also impacting on science. So what am I trying to propose to you? What I'm trying to actually propose to you is that it's important for us to know that these kinds of things are happening. It is important for us to be cognizant of that and to protest. Bring it to the attention of appropriate people as and when we can find the opportunity to bring these to the fore. Otherwise, what's going to happen is that whatever science we did is going to take a back seat, and it's going to decline over a period of time.
I will end by quoting Mr. Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh, who passed away yesterday. And in the 98th Indian Science Congress in Chennai, he made a statement: scientists are not just servants who do bidding of their paymasters. They are driven by curiosity and seek knowledge often for its own sake. Driven by curiosity, the drive of curiosity is being curtailed. The urge to seek knowledge for its own sake is also being curtailed, and this is creating or spelling a doom for Indian science in the years to come. Thank you very much for your attention. Thank you, sir. Science and technology is very important, but it is more important scientific temper. So onslaught on science and scientific temper to be fought continuously. Now it is the time for song. Bihar BGVS peoples will sing a song. Naresh, Bihar BGVS people.
Delegates, please don't go outside because our program is going on. Few speakers are there in the list, so your cooperation is very much needed. वॉलेंटियर्स बाकी साथियों को बाहर से बुलाइए। भट्ट साहब, विजय थोड़ा जाइए, प्लीज आइए, सबको बुलाइए। समीर जाओ बाहर। हेलो हेलो चेक हेलो 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 कॉर्डलेस माइक दीजिए, कॉर्डलेस दीजिए। हेलो हेलो बोलिए बोलिए सर। हाँ हेलो 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 हाँ हेलो हेलो हेलो। आइए सुनते हैं, गोरख पांडे की रचना है एक जनवादी गीत। झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया हो। जनता के अब पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया, जनता के अब पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया। झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया। जनता के अब पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया, जनता के आगे पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया।
आवे पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया झकझोर दुनिया करेली हिलेला झकझोर दुनिया झकझोर दुनिया हो झकझोर दुनिया झकझोर दुनिया हो झकझोर दुनिया जनता के आगे पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया जनता के आगे पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया लरेला किसनवा लरेला मजदूरवा लरेला किसनवा लरेला मजदूरवा लरेला किसनवा लरेला मजदूरवा लरेला किसनवा लरेला मजदूरवा पसीनवा हिलेला झकझोर दुनिया लरेली फुलवा पसीनवा हिलेला झकझोर दुनिया झकझोर दुनिया हो झकझोर दुनिया झकझोर दुनिया हो झकझोर दुनिया जनता के आवे पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया जनता के आवे पलटनिया हिलेला झकझोर दुनिया लरेली बहिनिया लरेली महतरिया लरेली बहिनिया लरेली महतरिया लरेली बहिनिया लरेली महतरिया लरेली बहिनिया लरेली महतरिया लरे सब दुख के संगतिया हिलेला झकझोर दुनिया लरे सब दुख के संगतिया हिलेला झकझोर
both Bodia Muraliji and his team. It is the cultural diversity which to be restored. Now, I would like to request one of the guest speakers, eminent Professor Paramita Chakraborty. She is a professor of Department of English, Jadavpur University, and eminent scholar on gender and social justice. He will speak now. Professor Paramita Chakraborty, please. नमस्ते। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ क्योंकि ऐसे जगह जहाँ एक फेस्टिव स्पिरिट के साथ साइंस मनाया जा रहा है, एजुकेशन, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये जगह हमारे लिए बहुत कम होते जा रहे हैं। मैं जब आ रही थी, मैं अनीता जी को बोल रही थी कि बहुत एक्साइटमेंट होता है और आशा भी जगती है, क्योंकि जिस जगहों में हम लोग काम कर रहे हैं वो जगह और भी छोटा होता जा रहा है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी। अभी बहुत अच्छा संगीत की परिवेशन हुई एक गाने से जो मैं बहुत सुनती हूँ आजकल। पुराना गाना है, 1971 में एक फिल्म आई थी मेरे अपने, गुलजार की डायरेक्शन में, और उसमें एक गाना था, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसकी दो पंक्तियाँ मैं पढ़ूँगी। बहुत आयरॉनिक है, पता नहीं मुझे हिंदी क्या आता है, मुझे नहीं आता है, मगर बहुत आयरॉनिक है। तो हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया है, लगता है वो भी एवे किया है, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। तो मैं एनईपी को जब देखती हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि काम नहीं है, बीए किया है, एमए किया है, हाईएस्ट रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग अब देख रहे हैं, और इसमें औरतों की हाल और भी बुरा है, क्योंकि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जो विमेन की है वो ऑल टाइम लो और घटता ही जा रहा है, और ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं। गर्ल चिल्ड्रन की तो बहुत बढ़ रहे हैं, ये कोविड के बाद में रिकवरी हुई ही नहीं। तो ये सब हालत में हम लोग हैं, मगर अभी भी हाल चाल तो ठीक ठाक लगता है। अगर आप एनईपी पढ़ें तो लगता है कि सभी ठीक ठाक है, क्योंकि ये पॉलिसी इतनी देर बाद आई, 1986 में लास्ट पॉलिसी थी, अब आई, और किस टाइम में आई, 2020 में, जब कोविड चल रहा था, सब एजुकेशन ठप पड़ा था, ऑनलाइन वो पढ़ाने की जो कोशिश हम लोग सब कर रहे थे एट एवरी लेवल, थिंग्स वर जस्ट फॉलिंग अपार्ट, चिल्ड्रन वर स्ट्रगलिंग, टीचर्स वर स्ट्रगलिंग। इस टाइम में ये भी बहुत मुझे आयरॉनिक लगता है और बहुत क्रूअल भी लगता है कि झट से एनईपी 2020 आ गया, और इसमें लग रहा है कि हालचाल सभी ठीक ठाक है। ये कोविड चल रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और आप पढ़ेंगे ये डॉक्यूमेंट को, आपको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत दुखद भी लगता है। तो इस जगह से मैं थोड़ा क्योंकि मेरा काम लार्जली है जेंडर पे, और एक स्कूल ऑफ विमेन स्टडीज़ हुआ करता था, अभी भी है नाम पे, जादवपुर में। बहुत ही फंड कट्स हुए हैं, आपको पता है, सभी जगह हुए हैं। जो विमेन स्टडीज़ सेंटर्स बनाया गया था 1980s के 1989, 90 इस समय से चल रहा था, उनका बहुत ही बुरा हाल है। तो उसके साथ मैं जुड़ी थी, और अब एक जेंडर लेंस से जब वो एनईपी को मैं पढ़ती हूँ तो बहुत ही निराशा होती है, मगर आशा एक बात की होती है कि अभी भी ऐसी जगह है जैसी जगह हम लोग बात कर सकते हैं, अभी भी बात कर सकते हैं। तो मैं 2-3 चीज़ वो जो हम
हम जेंडर इम्प्लीकेशंस बोल सकते हैं, एनईपी का बोलूँगी, मगर ज़्यादातर बात मैं दूसरी चीज़ की करूँगी, वो है विमेंस मूवमेंट की, जिसके साथ मैं जुड़ी हूँ। और एक जो प्रॉब्लम लगती है, अब अनीता इधर बैठी है, उनको भी शायद ये लगे, क्योंकि बहुत समय तक एजुकेशन वॉज द सेंट्रल वुमेन्स क्वेश्चन, कि जब हम औरतों के बारे में बात करते थे तो एजुकेशन के बारे में सब, आप अगर 19th सेंचुरी से हिस्ट्री देखिए कि, और अभी भी ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो आइडिया है, ये क्योंकि हम औरत के सशक्तिकरण के पहला बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मानते हैं कि एजुकेशन है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक जगह है, मगर पता नहीं क्या है विमेंस मूवमेंट में एजुकेशन फॉर विमेन, ये मुद्दा थोड़ा साइड में चला गया है। क्यों चला गया है पता नहीं, इस पे अगर कोई कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे तो बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि हम एजुकेशन के बारे में इतने बात नहीं करते हैं। एजुकेशनिस्ट बात करते हैं, जेंडर के बारे में बात करते हैं, मगर जो जेंडर वाले हैं, जो विमेंस मूवमेंट में हैं, जो जेंडर के बारे में बात करते हैं, वो इतना एजुकेशन में के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये जो इंटरफेस में काम करना, वो एजुकेशन और जेंडर के इंटरफेस में, ये बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम संस्थाएं करते हैं। और जेंडर पे जो काम करते हैं वो ज़्यादातर वायलेंस पे काम करते हैं, उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि वायलेंस अगेंस्ट women इज़ नॉट वन ऑफ द सेंट्रल इश्यूज दैट अफेक्ट women, and is something that the women's movement needs to take very seriously, but I think education का मुद्दा क्यों साइडलाइन हो गया, इस पे भी थोड़ा चर्चा करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से शायद अब स्टेट कोऑप्ट कर दिया है जेंडर, उसने वो एजुकेशन में जेंडर क्या बोलना है, कैसे सोचना है, वो बता रही है हमें, और ये बहुत ही एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। और मैं जब वो एनईपी को देखती हूँ, जो एक अलग जगह है, ऐसे नहीं है कि जेंडर इज समथिंग दैट इज वर्कड इनटू द डॉक्यूमेंट, एक अलग से जगह है, वो इक्विटी वाली जगह है। उस जगह में किसी की बात करना है तो आप इधर ही करो, ये मेन स्ट्रीम में इसका बात नहीं होगा। तो क्या है, ये कैटेगरी बनाया उन्होंने कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, कुछ SEDG ऐसा नाम दिया है, और उसमें सभी औरतें, सभी गर्ल्स, सभी उसमें हैं। तो आप मान ले रहे हो कि सारे जो विमेन हैं हमारे देश में और गर्ल्स हैं, सभी सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं। तो अगर आप ये मान रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप अगर ये मानते हो तो आपको तो कुछ करना चाहिए फिर इसके बारे में। और ये डिसएडवांटेज्ड क्या होता है, किसने डिसएडवांटेज किया उनको, तो स्टेट का क्या भूमिका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है कि डिसएडवांटेज वो ऐसे ही हो गए। और ये सोशल जो है, ये सोशल के साथ पॉलिटिकल की क्या लिंक है, कुछ लिंक नहीं है। कुछ ये कल्चर सोशल ऐसे बोल के ये हमारे समाज में हैं, ये पिछड़े हुए हैं, तो उनके पिछड़े होने के बारे में आप क्या कर रहे हो, सरकार क्या कर रही है? और आपने इतना अच्छा पॉलिसी बनाया है, तो इस पॉलिसी क्या कर रही है? ये पॉलिसी क्या कर रही है मैं बता रही हूँ आपको पता है शायद। ये जेंडर इंक्लूजन फंड इसने बनाया है। पहले तो बजट का तो पूछो ही मत, किसी ने शायद कहा इधर कि बजट का, वो साइंस में बजट के बारे में बात कर रहे थे, मगर साइंस में बजट तो आप छोड़ो, स्कूल एजुकेशन में बेसिक एक्विटी और ये सब कैटेगरीज इन्होंने बनाया है कि ये सब चिल्ड्रन जो डिसएडवांटेज्ड हैं, तो इनको मेन स्ट्रीम कैसे किया जाएगा, इनको कैसे जो रेगुलर एजुकेशन से कैसे ये जुड़ेंगे, इसका एक्सेस कैसे बढ़ाया जाएगा। तो अगर सभी गर्ल्स इसमें आते हैं तो थोड़ा चिंता के विषय है ना। ये तो आज़ादी की अमृत साल और ये 75 साल की आज़ादी हमने क्या किया, तो ये मुझे बहुत मैं चकित होती हूँ जब मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ती हूँ। और ये जेंडर इंक्लूजन फंड, अलग से फंड किया गया है कि जेंडर इंक्लूसिव एजुकेशन हो, और इस जेंडर में फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ये दो कैटेगरी उन्होंने डाल दिया, एज इफ देयर नीड्स आर द सेम। और
ये इससे क्या होगा, इस फंड से, फंड कहाँ से आएगा ये तो पता नहीं, वो 6% बजट का तो वो तो हो ही नहीं रहा है, वो तो एकदम, वो तो बजट के बारे में बात करने की कोई अहमियत ही नहीं है। मगर अलग से फंड, और ये फंड से क्या होगा, साइकिल खरीदा जाएगा और ये कन्याश्री जैसे जो स्कीम्स हैं वो कैश ट्रांसफ़र के चीज़ें किए जाएंगे और टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, ऐसा कुछ बोला है। मगर एग्जिस्टिंग तो ये सब है, इसकी यूज़फुलनेस क्या है, इस पे कोई डेटा नहीं है। और डेटा का तो आप पूछो ही मत, ये तो डेटा इज़ अ जेंडर इशू ऑल्सो, आई थिंक यू नो, ह्यूजली। एंड यू नो, एज पीपल हु वर्क विद जेंडर, हम लोग एक डेटा क्राइसिस, एक डेटा फैमिन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तो छोड़ो कि सेंसस ही नहीं हो रहा है, तो ये कास्ट सेंसस होगा कि नहीं, इस चक्कर में तो सेंसस ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो अब वो 2011 की डेटा हमारी बेसलाइन हो गई है, तो इससे हम कैसे अब क्या काम कर सकते हैं कि क्या हुआ है, कितना हुआ है, चेंज क्या हुआ है। वी डोंट हैव एनी बेसलाइन डेटा। इफ यू वांट टू लुक एट अ स्कीम विच इज वर्क फॉर 5 years, यू कांट। तो ये भी मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं ये डेटा फैमिन का, और ये बहुत क्लियरली उभर के आया है ऐसा एक डॉक्यूमेंट में, जहाँ एकदम कोई संदर्भ नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं। ये NEP किसके लिए है? आप कभी गए हो, आप देखे हो कि एक बच्ची जिसको साइकिल मिलती है वो क्या करती है? तो ये तो लगता है कि बैठ के एक कमरे में बस बना दिया है कि हाँ साइकिल देने से किसी को सुविधा होती है। और ये कैश ट्रांसफ़र का तो हम लोग देख रहे हैं कि पैसा लेके डाउरी दे रहे हैं, ये इस पैसा जा रहा है ब्रदर की एजुकेशन के लिए। कितना रिपोर्ट फेमिनिस्ट ने बनाया है, ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया है। जब पॉलिसी बनती है, none of that data even counts, and there is no data, recent data. तो ये तो एक वैक्यूम में ये पॉलिसी बनी, इसकी भाषा पढ़ के भी आप समझ पाओगे कि जो बना रहे हैं इनकी कॉन्टेक्स्ट और रियलिटी के साथ कोई रियलिटी चेक नहीं है। और ये किसके लिए है? हु इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी? ये तो मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैं कोई चित्र देख नहीं पाती हूँ। यू नो, when I read the policy, who is it for? I can't even see a recognizable child's face, because it is completely abstract. It's done in a complete vacuum. So ये सब तो है ही। और एक चीज़ है कि semantics है, ये word play है। और जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, ये मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, हाउ विल इट अफेक्ट द गर्ल चाइल्ड? बहुत सिंपल है, हम लोग सब जानते हैं जो स्कूल एजुकेशन लेके थोड़ा भी काम किया है, हमें पता है कि हम लोग हर वक्त ड्रॉप आउट के बारे में बात करते थे। अब ड्रॉप आउट की नई डेफिनेशन आ गई है, वो है मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी। अब ड्रॉप आउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होगी, किसी की नहीं होगी, ये आपकी चॉइस कि आप 6 के बाद नहीं पढ़ोगे, कि आप 8 के बाद नहीं पढ़ोगे। तो ये मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, और फिर तो BA में तो हमने देखा है, DU में क्या हुआ है, वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आई टीच एट अ यूनिवर्सिटी, उसमें BA में वो 3rd ईयर के एग्जिट करेंगे, कोई लोग रह जाएंगे एक एक्स्ट्रा ईयर के लिए, उनको रिसर्च सिखाना पड़ेगा। अब बोल दिया है कि 75% अगर स्कोर नहीं हो तो रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी के पास 75% नहीं हो तो क्या होगा? फिर 4th ईयर नहीं होगा, कोई नहीं होगा उसमें। तो किसी ने सोचा ही नहीं इसका क्या नतीजा निकलेगा, और स्पेशली हाउ इट विल अफेक्ट डिसएडवांटेज, सो कॉल्ड डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, जिनको सिस्टमैटिकली डिसएडवांटेज आपने किया है, मगर इसको सब्जेक्ट को रिमूव कर दो कि ये डिसएडवांटेज ही है, ऐसे ही है, पैसिव में बोल दो। और ये लैंग्वेज को लेके बहुत सारे खेल चल रहा है इसमें। सो आप ये मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी से आपका इट विल लुक गुड, बिकॉज इंस्टेड ऑफ सेइंग 12th फेल, यू विल से 11th पास। नाउ प्लीज टेल मी, हाउ डज इट अफेक्ट रियलिटी? इससे सबको बहुत सुकून मिल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं। और अगर आपको पता है कि एक 4 साल की डिग्री है BA कोर्स, और आप 3rd ईयर में आप निकल रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? और बहुत अच्छा बोल रहा है, हाँ ठीक, आप जाके यू जॉइन एम्प्लॉयमेंट, because a research degree is not for you. Only some people who've got 75 and above will do it. So you go and join the queue for jobs. And where is the job?
सो क्या हम लोग बोल रहे हैं वोकेशनल स्किल्स? वोकेशनल स्किल्स, ये डिबेट बहुत पुराना डिबेट है, कोठारी कमीशन से डिबेट चला आ रहा है। वोकेशनल स्किल्स हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ सूटेबिलिटी देख के, तो ठीक है, वन अंडरस्टैंड्स, बट इट्स ऑल्सो अ डिनायल of higher education facilities and the right to higher education to certain people. So let us not, juggle with words and see things for what they are and what are you doing about, So ये तो एक मुझे इतना गुस्सा आता है मैं बोल भी नहीं पाती। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। और एक चीज़ हमको याद रखना चाहिए कि unlike European countries and economies, we are a very young nation. हम लोग ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के बात करते हैं कि बहुत यंग हमारी देश है, तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन वी आर टोल्ड इज अंडर 25, 60%, 65% इज अंडर 35, सो युवा देश है। और आप कंपेयर कीजिए कि चाइनीज़ जिनकी एवरेज एज ऑफ द एवरेज सिटीजन अपेरेंटली 37 है, जापान में 48 है, हमारा 29 है। तो ये इतनी जो युवा को लेके हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट तो होगा नहीं, BA करके बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा हाथ पे। और पढ़ाई का भी क्या होगा? यू आर क्रिएटिंग अ मल्टी टियर्ड सिस्टम कि किसी लोग को आप बोल रहे हो कि आपके पास इजाज़त है, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, किसी को आप बोल रहे हो नहीं जा सकते। तो इसका मायने क्या है? And you read it together with things like we have stopped the MPhil, which used to be a research degree for people who didn't feel ready for a PhD. So एक तो सिस्टम था, उसको आप हटा रहे हो, फिर आप दूसरी तरह की एक ग्रेडेड सिस्टम कर रहे हो। और ये सब शब्द की अर्थ क्या है? आप बोल रहे हो कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिलेगी सब इंस्टीट्यूशंस को। ग्रेडेड ऑटोनॉमी की मायने क्या है? Graded autonomy basically means you have to go scrounge for funds because we are not giving you any. So UGC आप हटाओगे, AICTE आप हटाओगे, तो आपके पास बचा क्या होगा? तो ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और व्हाटएवर वो जो रूब्रिक बॉडी होगी, तो उसका काम क्या होगा? एक होगा आपका रिसर्च मॉनिटर करेगा कि आप किस बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो उसका वो नॉलेज की वो सर्वेलेंस चलेगी, उसका काम होगा। और काम होगा उसका कि आपको फंड तो नहीं देगी मगर आपको वो इवैल्यूएट करेगी। तो ये जो नैक अब आ रहा है, सब थर थर कांपते हैं, नैक आ रहा है, नैक आ रहा है। तो मैं सबको बोलती हूँ तो नैक आ रहा है तो क्या है? UGC तो पैसा देने वाला नहीं है, अगर हमें C भी मिले, D भी मिले, क्या आता जाता है? क्यों हम डरे इनके साथ? और वो नैक आके बोलता क्या है? हमें जादवपुर को A++ मिलने वाला था, बेस्ट यूनिवर्सिटी, ये सब दूसरे सब रैंकिंग में हम लोग सब सेकेंड थर्ड आ रहे हैं, मगर हमको A++ नहीं मिला, हमको A+ मिल गया। तो सब तो सर खपा रहे हैं कि क्या हो गया, नहीं मिला हमको। तो नहीं मिला क्यों? सो कारण दिखाए हैं कि आपके फीस बहुत लो है। दिस इज अ रीजन फॉर अ यूनिवर्सिटी नॉट टू गेट A++. Not because we aren't doing enough research, not because our diversity records are bad, nothing. Because our fees are too low, and we are a public university, and we have been downgraded because our fees are too low. तो ये तो माहौल है, माहौल समझ के भी ये डॉक्यूमेंट की मायने निकालना चाहिए। तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी तो ये है कि आपको पैसा नहीं देंगे तो आपको ऑटोनॉमस होना पड़ेगा। You can't depend on their funds, but you will be constantly evaluated by them and you will be surveilled by them. So this is the meaning. So I think, मैं तो लिटरेचर के स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है क्योंकि ये बहुत इसकी वो सेमेंटिक प्ले बहुत इंटेंस है। तो मैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ और इसकी टेक्सचुअल एनालिसिस करती हूँ, मगर ये भी सोचती हूँ दिस इज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस of our people, and it's not just semantics, we need to do something about it. So this is extremely worrying situation. Magar aur bhi ek cheez hai, the kind of research that's coming out, as I was saying that there's a data famine, but there's also a lot of surveys that are being done and a lot of things that our researchers are telling us which is never reflected in any of the work or the schemes or the policies that we are making. So I would just like to refer to, and this is work done by a friend, so Mary John's work, which is on child marriage. So child and early marriage, हम लोग child marriage अब नहीं बोलते हैं, तो early marriage का एक देखेंगे इस gender, in the gender world,
this is like the one thing that everybody is working on, you know, क्योंकि इस पे बहुत funding है. इस पे funding क्यों है? Because there's an anxiety on the part of the country, on the part of the nation, कि early marriage, and again this has a 19th century history, that early marriage होता है तो ये हमारा पिछड़ापन का एक sign है. हम लोग पिछड़े हैं, इसीलिए हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज होता है, अर्ली मैरिज होता है. तो हम अगर एडवांस करना चाहेंगे, 21st सेंचुरी वाली नेशन बनना चाहेंगे, तो हमें इसको ख़त्म करना चाहिए. So it is a very instrumentalist goal. It is not really about, you know, empowering women. The rhetoric is empowering women, but it is really about a civilizational status of India. So I think what is very important for us to understand here is when we look at something like early marriage, and this is something that Mary John has said very clearly, that it's not really a cultural issue or a social issue कि हमारे एक superstitious whatever country है हम लोग इसीलिए. It's because more and more women and their parents think that education is not getting us anything or anywhere. And many of the girls that she had interviewed who had gone into early marriage said that it was a choice. It wasn't because of poverty, it wasn't because of social custom, it was what they chose. Because they said that we did not think that there was a future for us beyond this. And this is the most damning thing, you know, after 75 years of independence, if this is what many women and young women and minors in our country are saying and thinking, we really need to think about this. The other thing, again, very, very interesting, education has become kind of redundant. It has made itself redundant in at least women's lives. And that is the tragic thing that, you know, we have to contend with. And the other thing, the other bit of research that she did, which also is very worrying, is that she's actually saying, and this is with data, that the percentage of women in higher education has actually increased dramatically. Especially after 2006, after the OBC reservations came in, women and minorities have really, and this we can see on our own campuses. Number of women have really increased. So now, like during independence, the percentage of women in higher education was 10%. Now it's, I mean, when I say now, it's like 2011-12 data. Obviously, it's old data, but 46% women are in higher education. So they're almost catching up. But you collate it with data on employment, women's workforce participation has gone down dramatically. So where are these women who are getting higher education going? They're all going into marriage. So what are we talking about? Autonomy, सशक्तिकरण, ये सब हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोलने की बातें हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं? Education पे क्या कर रहे हैं? Employment पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है. तो इधर I'll just end with this, that I think women themselves, especially women in higher education who are joining public universities, बहुत बोल रही हैं. And that is our hope, that they will not take this lying down. और ये जो बोल रही हैं, हम लोग इनको देख रहे हैं एक violence against women की framework से. क्योंकि ये framework में हम लोग इतना used to हो गए हैं कि हमें और कुछ दिखता नहीं. So women's movement भी, ये जो Me Too इतना हो गया, बहुत सारे sexual harassment related incidents हुए, जहाँ women students was trying to tell us things, हाँ? तो BHU में हमने देखा है कैसे molesters आ रहे थे, women students were actually forcibly, you know, forcing them out. There was almost a pitched battle in the campus. There were, you know, Ho Collar happened in Jadavpur here, which was actually triggered by an episode of sexual harassment. In the very recent past, I mean, it's not even past, it's heartbreaking. Just down the road, the Arjikor episode happened where a woman was raped, and it was represented here in the cultural program as well. So, or for instance, the very important movement of Pinjra Tod, where women are saying that, you know, stop these curfews in our hostels, because we can't work in the library for as many hours as boys do, because we have to come back to the hostel. Now, we can't be seeing this through a violence against women lens anymore. These sexual harassment episodes are really flashpoints
by which women are saying we need a space in the public university campuses. We need a space for ourselves. We need a voice for ourselves. And they're saying much more than just, somebody has harassed me, which is why even in the Me Too we saw that, it's not about casework. It's not about the ICC solving a particular harassment case and giving justice or not. It is about a systemic problem that they are talking about. I'm just finishing. It's a systemic problem that they are talking about, and it's about the space of women in campuses, in education, and the heartening thing is, and I'll just finish with this. The heartening thing is also the Jamia women, of course, that even in the RG Kaur movement, what we saw is, although there was a huge focus on the rape and the forensics and the evidence disappearance and all of that happened, but what young women were taking out of that, and many of my students were part of that movement, was women's right to work in a safe environment. So workplace safety became the takeaway from that episode of rape. It's not just violence against women, it is women's rights to work and women's right to higher education, which this junior doctor was clearly, representing. So I'll just sort of finish. I began with a song, I'll finish with a poem, which is one of my favorite young poets, Amir Aziz. You know this, Jamia Ke Ladkiyan, so I'll just close with that. किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन नहीं, ये है जामिया की लड़कियाँ. So these are the women who became the iconic face of the anti-CAA, of what started the anti-CAA movement. The women on the lorry, holding the. किसी की आबरू, किसी की इज्जत, किसी का सहन नहीं, ये है जामिया की लड़कियाँ. जिंदगी भी जीती हैं, सिगरेट भी पीती है, आवारगी की मिसाल भी हैं जामिया की लड़कियाँ, और मन ही मन में दुनिया की सारी औरतें भी हैं जामिया की लड़कियाँ. So may this really start a kind of dialogue between the women's movement. सारी औरतों की भी लड़ाई ये है, ये women's movement को भी recognize करना है कि education के बारे में हमें बात करनी चाहिए, employment के बारे, क्योंकि ये लड़कियां हमें बोल रही है कि बात करो. So thank you. Thank you, madam. All of you have the program list. 3 more speakers to tell. Now I request Dr. D. Raghunandan, our ex-president and also active in Delhi Science Forum. I would request him to say something on this session. Good evening, everyone. नमस्कार. सर, आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा बैठ लें. थैंक यू. मैं आपके सामने आज का जो थीम है हमारे पीपल साइंस 18वें कांग्रेस का, एक थीम इसमें यह है क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट. What does it mean and why are we emphasizing that today? That is what I want to talk to you about, hopefully in about 15 minutes. And I request Asha to please give me a knock when I get close to 15 minutes. 2014, when this government first came to power, during the campaign, election campaign in 2013-14, the future Prime Minister Narendra Modi ji went to every constituency where he campaigned, and one of the major campaign planks of Modi ji was to promote ease of doing business. भारत में अगर आपने धंधा चलाना है, कंपनियां चलानी है, तो उसको सरल कैसे किया जाए. And his main target was सरल करने के लिए
पर्यावरण को लेके जो लोग हल्ला मचाते हैं और रुकावट पैदा करते हैं उसको परे करो. Put aside all environmental objections because that is the biggest roadblock. He said this in so many words and he was true to his word because when he took power, जितने पर्यावरण मंत्रालय में जो कानून बने थे, all the regulatory systems, he collapsed them one by one. एक कमिटी होती थी मंत्रालय में जो जितने प्रोजेक्ट आते थे उसकी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके उसको स्टडी करके कौन से प्रोजेक्ट्स को परमिशन दिया जाए और कौन से को ना दिया जाए क्योंकि वो पर्यावरण के लिए हानिदायक हैं, वो तय करते थे. मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके वेबसाइट में डेटा है 600 प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन आए, उसमें से केवल 4 रिजेक्ट हुए, 596 प्रोजेक्ट को पार कर दिया. सो द कमिटी दैट वाज सपोज्ड टू लुक एट projects to assess their impact on environment became a committee to quietly pass all projects and very rare exceptions में उसको मना करना. I remember in 2015-16 writing an article saying what used to be called the Ministry for Environment has now become the Ministry Against Environment. क्योंकि उनका काम ही ये था. And the government's plank was all those who did not want development were raising the issue of environment. कि जो पर्यावरण को लेके मुद्दा बनाते हैं वो विकास के खिलाफ है. तो विकास के खिलाफ also then became देश के खिलाफ. अगर आप विकास के खिलाफ हैं तो आप देशद्रोही भी बन गए. So you could not oppose. आज के दिन भी अगर ये आप NGOs जितने को FCRA के लाइसेंस जिनके छीन लिए गए हैं उनको अगर देखोगे ज़्यादातर वो NGOs हैं जिन्होंने ट्राइबल इलाके में, जंगल के इलाके में, खान जहाँ पे हैं, माइंस जहाँ पे हैं, उन प्रोजेक्ट्स का विरोध किया है और उनको इन्होंने FCRA का लाइसेंस कैंसिल करके कर दिया है. तो इसमें जो इनका एक रवैया है, एट एनी कॉस्ट प्रमोट सो कॉल्ड डेवलपमेंट, मैं तो उसको विकास कहता ही नहीं हूँ क्योंकि जो पर्यावरण को नष्ट करे और पर्यावरण के साथ देश हित को भी अटैक करे, एनीथिंग दैट डैमेजेस द एनवायरनमेंट विच ऑल्सो डैमेजेस पीपल्स इंटरेस्ट. इफ यू आर डैमेजिंग द फॉरेस्ट्स, you are damaging the people whose livelihood depends on the forests. 300 to 400 million people in this country live around forest areas and are forest dependent countries. So if you attack forests, you are attacking these people as well. I will give you just 3 or 4 examples of the way in which the path of development adopted now is such that it is ultimately, intrinsically, not just anti-development, it is anti-people and anti-environment also at the same time. इसके 2-3 उदाहरण आप देख लीजिए which compound each other. I'll give you examples from Uttarakhand and Himachal Pradesh. There is this big, almost 900 kilometers highway called the Char Dham Highway. जो 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को कनेक्ट करते हुए 900 किलोमीटर की सड़क है. उस सड़क को बनाने के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लेना था सरकार ने, विच दे वर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू डू. उनको परमिशन नहीं मिल रही थी. उन्होंने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को 100 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में बदल दिया. बिकॉज अगर 100 किलोमीटर से कम का प्रोजेक्ट हो उसके लिए EIA आपको लेने की जरूरत नहीं है. सो दे डिवाइडेड दैट प्रोजेक्ट इनटू 100 किलोमीटर प्रोजेक्ट्स एंड इवन सुप्रीम कोर्ट अलाउड दैट टू गो थ्रू. इतने तरीके से उन्होंने कैंसिल किया. आज उस 4 धाम हाईवे में, which was supposed to be an all-weather highway, it was built using extremely bad construction techniques. हिमालय जो बहुत नाजुक पहाड़ हैं, very fragile mountains, उसको ऐसा काटा
with dynamite, cutting with 90-degree cuts in the mountain where maximum should be allowed is 30-degree slopes, और जो मलबा पहाड़ से निकलता है उसको लेके नीचे फेंक दिया जहां वो नदी के अंदर जाके गिर गए। नदी के अंदर गिरे तो द बेड ऑफ द रिवर राइजेस, तो अगली बार जब बाढ़ आएगी तो इट ओवरफ्लोज द रिवर एंड ड्राउन्स आउट द टाउन्स एंड सिटीज अलॉन्ग साइड दैट। तो आपने ऐसा विकास का रास्ता अपनाया विच इज डैमेजिंग एवरीथिंग ऑन द वे। आपने पढ़ा ही होगा तपोवन का जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो तो पूरा बाढ़ में इट वॉज वॉश्ड अवे, more than 250 workers died, that entire project is gone, and because of the way in which that was built, पास में जोशीमठ का जो टाउन है वो जोशीमठ का पूरा शहर ही डस गया, because you have done such terrible construction on the way that that whole town of Joshimath has subsided. And that's not the only one. ये तो headline आ गए जोशीमठ के, बहुत सारे वहाँ पे शहर हैं, और शहर भी वहाँ पे कैसे बसे। If you travel around that area, you will find अंधाधुंध, मतलब there is no planning, there is no understanding of how much is the carrying capacity of those hills. You have allowed development and settlements, habitation, buildings to come up wherever you want, और वहाँ पे ना पानी है ना strength है उसको लेने के लिए. So what I am trying to say is, we are today have embarked on a path of what I will call reckless development. It is reckless, and you are doing it in such a way that you have virtually damaged the environment on a permanent basis. You can't recover those. Excuse which is used is you need development, you need employment, you need tourism. How much tourism will you have? Even after constructing this Char Dham highway, before the highway they used to restrict 500 tourists at a time. They used to allow to go up the hill. With the Char Dham highway, they should have been able to allow 20,000. वो भी नहीं हो रहा. Now again they have said go back to 500. Then what's the point of building that highway for 400? ये तो आपने एक तरफ किया. Today, two other problems have come. I'll just touch on them so that you know. एक तो आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, अंडमान निकोबार आइलैंड में, निकोबार द्वीप में जो सबसे दूर है, almost at the next to Indonesia, about 100 kilometers away. Government has plans to do island development throughout the Andaman chains. उनको लगता है कि मालदीव्स जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस तरह से हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में उसको डेवलप करेंगे. एंड इन निकोबार आइलैंड, दैट फर्देस्ट आइलैंड, ग्रेट निकोबार में, they are planning a port, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो सामान आएगा जहाज़ों में वहाँ पे ट्रांसफ़र होके दूसरे जहाज़ से लेके उसको मलेशिया, कोरिया वगैरह वहाँ पे ले जाने का. एंड अ टाउनशिप ऑफ 4 लाख पीपल they are building on an island where today the population is 8,000. तो जहाँ पे वो द्वीप है जो कि कम से कम 15,000 20,000 साल पहले एक छोटे से 200 अब उसके परिवार बचे हैं वहाँ पे, दैट ग्रुप, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, जो इस देश के सबसे पहले, मैं कहता हूँ, आदिवासी हैं, वो तो खतरे में है क्योंकि आपने 4.5 लाख की आबादी वहाँ पे प्लान की. उन द्वीप का क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग? इतने सारे उसमें प्रोटेस्ट हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन कॉग्नाइजेंस ऑफ इट. गवर्नमेंट कह रही है नहीं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. सेकेंड प्लान विच द गवर्नमेंट हैज गॉट इज टू इंट्रोड्यूस पाम ऑयल. आपने पाम ऑयल सुना होगा. इंडोनेशिया, मलेशिया में पाम के पेड़ उगा के उससे तेल, that palm oil is now being imported into this country at duty free concession. हमारे इंडिया के अंदर जो ऑयल उगाते हैं, that is being affected. And this palm oil, government says we will promote in the northeast, which is your one last remaining evergreen tropical forest, वहाँ पे, and in the Andaman Islands, in which the Supreme Court has put a stay. तभी सरकार कहती है हम करेंगे. We are going to do. These two projects itself symbolize this government wants to do whatever
it classifies as development, but which is actually anti-development or counter-development in this. On top of this, today we are facing the big challenge of the impacts of climate change. मैं तो ये कहूँगा कि maybe 4 or 5 years ago, we in the All India People Science Movement have been active on this issue of climate change, particularly in the global negotiations for leading up to the Paris Agreement and what should be India's position on that. And I take pride in the fact that the People Science Network was the first organization in this country to take a position in 2008 that till then India had taken the position, this is a problem made by developed countries. We don't have to do anything on climate change. Let the Europeans and the Americans handle it. But in 2008, People Science Movement took the position and went public that India should take the position that even though we have not created the problem, we want to contribute towards the solution in the interests of the global community. Whatever we can, we will contribute to it. We were fully expecting कि लोग हमें पत्थर फेंकेंगे, but we found that we were getting a good reception and people were listening to this. Within 2 years, we had built a coalition of about 75 organizations, which together formed a petition, submitted to the government, and the government adopted this position at the Copenhagen Climate Summit and changed its position. So we were able to make an impact. But today, thank you, but today we are facing a position where in the international sphere, the efforts to check climate change are not going well. They are not going as far as required. That's on the one hand, while on the other hand, we in India, along with so many other developing countries, are now facing the problems and the impacts of climate change. I'm not saying this has happened overnight. We have been facing these impacts for 15 years, 20 years. Ask our friends in Himachal, OP is sitting there. Farmers in Himachal know that farmers who are at the height altitude of 3,000 feet, apples used to grow there. They don't grow there anymore. Apples are now growing at 5,000 feet. They have been suffering it. People in the other parts of the country have been sort of thinking, what's happening? Maybe climate change is something which is very far away. Few of us who are doing all this work on climate, even within the People Science Movement, a lot of us, we participated in meetings, etc., but it's a technical subject. कितना emissions कम कर सकते हैं, दुनिया में कितना कम करना चाहिए ताकि temperature इस ceiling में आ जाए, थोड़ा technical मामला है इसमें. So climate change was in a sense some remote problem about which you and I may not be able to do very much. But today, climate impacts, जैसे मुंह पे थप्पड़ मारते ना, suddenly you wake up. Climate impacts have hit India in the face. पिछले 3 साल में आपने देखा होगा गर्माहट कितनी बढ़ी है. We have had heat waves in this country, temperatures nearing 50 degrees Celsius, lasting 2 weeks, 3 weeks at a stretch. And it's happening every year. 50 degrees Celsius वैसे ही बहुत ऊंचा है. It's a very serious height of temperature, but I think what people have not realized so much is, अगर आपके यहाँ नमी बहुत है, if humidity is very high, then the combination of heat and humidity, even at about 40 degrees Celsius, can be life-threatening. World Health Organization has said 38.5 degrees of what it calls a heat index, combined temperature and humidity, can be at the point of human survivability. We are that close. So heat wave has become a reality. The whole country is facing it now and knows it. Second is extreme rainfall. This is also something we are witnessing every year. The problems in Himalayas, in Himachal, in Uttarakhand that we were talking about are also compounding. Extreme rainfall comes, you have done bad construction, roads are badly built. On top of that, you have extreme rainfall, therefore you have landslides every day. Somebody was talking about
the Himachal Chief Minister, I think, said that people eat non-vegetarian food, इसीलिए जो है वो landslide हो रहा है. Even climate change and extreme rain is taken as an act of God. Climate change itself is not an act of God, it's an act of man. Because we have created the problem of climate change. On top of that, we have created now this problem. Extreme rainfall is bringing landslides. Extreme rainfall is also bringing floods in the cities. Every city in this country, every year, is now getting flooded. Every time during June to July, if you open the television or read the paper, cars are floating in Bangalore, boats are sailing in the middle of Chennai or Bombay. Why? Because we have got such horrible urbanization patterns. Nobody is thinking of how to urbanize. All the routes for the water to go into the nearby river, lake, they are blocked. You have built roads where the water should flow. So you've got nowhere to go for the water except to flood the city. So extreme rainfall is causing floods every year. Every year, big cities are experiencing losses of 10,000 crore, 15,000 crore, these kinds of losses. How are we going to handle these? So over the last 1 year or so, People Science Movement, we have held 3 or 4 meetings of our activists. And we have decided we are now at crisis point. But the crisis is also an opportunity for us to act. And we have decided that next year, in 2025, the People Science Movement all over the country is going to launch a nationwide campaign on climate impacts to tackle 2 major problems, extreme heat and extreme rainfall. And extreme rainfall along with the problems of landslides and the problems of urban flooding and related issues. You might think, extreme heat का क्या करेंगे भाई, गर्मी है तो क्या कर सकते हैं हम, बहुत कुछ करने को है. Government of India, National Disaster Management Agency has brought out a manual how to tackle heat wave. उसमें सबसे पहला recommendation है stay indoors, घर के अंदर रहो. शायद हो सकता है आप और मैं घर के अंदर रह सकते हैं, यहाँ पे हॉल में हम एयर कंडीशनर चला सकते हैं. जो मजदूर है, जो इमारत बनाता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो डोमेस्टिक मेड है, जो एक घर से दूसरे घर जाके आपके बर्तन मांजती है या खाना बनाती है, दे कैनॉट स्टे इंडोर, उनको तो बाहर रहना ही है, तो वो क्या करेंगे? What are we doing for them? Are we doing anything for them at all? How to protect them from the heat? और अगर गर्माहट लगेगी भी, then what are your preventive measures? Is the health system geared or not? All these are issues which we want to take up. We have drawn up plans. Our sub-plenary on environment tomorrow and the 2 workshops after that are going to be working out detailed plans for this, so that next year, from February, when the summer starts heating up in Kerala and then moves northwards, we are ready in action to step into the fray, along with what we had started 20 years ago in tackling the climate emissions and the global warming problem at the international level. We will continue that campaign, but now we will change from a technical, analytical campaign to a grassroots mobilization campaign to fight climate impacts. And this will mean that all of us, the entire People Science Movement, will be engaged in this campaign next year. I request those of you who are here to please also tell all our friends who are not here to attend our plenary on environment and climate change tomorrow at 12 to 2, and also those of you among the various organizations who are dividing up, please attend the 2 workshops under the environment plenary. Thank you all very much. Yes, we have to act now to protect our environment. Thank you, Raghuji.
Uh, Two speakers remaining. Now I request Dr. Sohail Hazmi, eminent cultural personality and historian, to say something on this session. Please forgive me. I'll be reading, but don't worry. This is not a long thing at all. I hope to be able to finish it in the next 7 minutes. थोड़ा देर हो सकता है because some of the bits I'll try to speak both in Hindi and English. तो मैं शुरू में ही बता दूं कि मैं एक टोटल आउटसाइडर की तरह यहाँ पर हूँ, बिकॉज पीपल साइंस नेटवर्क को मैं बाहर से ही देखता रहा हूँ और जिन खतरों का सामना आप लोग कर रहे हैं वो और जिन समस्याओं से आप लोग रोज़ जूझ रहे हैं वो इंस्पायर करती हैं। और आजकल जिस तेज़ी से हालात बिगड़ रहे हैं उससे कुछ ये भी अंदाज़ा होता है कि आप किन खतरों का सामना कर रहे हैं। तो this is a gathering of scientists and activists working in the field of spreading a scientific outlook. I, on the other hand, am someone who has only been watching your struggle from the margins and have seen how difficult your work is becoming today. और मैं इस कठिनाई के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हम किस चीज़ से जूझ रहे हैं इसके बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। We are living in times when extremely unscientific ideas are being propagated. These ideas are being presented as part of our traditions that are claimed to go back thousands of years. ये रोज कहा जा रहा है कि हमारी बहुत पुरानी हजारों साल पुराना विज्ञान है और उसमें अजीब अजीब बातें कही जा रही हैं। और उनके बारे में ये जो कुछ कहा जा रहा है इनको क्वेश्चन करना आजकल खतरनाक हो गया है। Those who dare question these claims are attacked, arrested, jailed, and sought to be silenced. I don't have to give you names of people who have been kept in prison, people who were old, who were sick, who could not move unassisted, and what we have done to them. I don't have to tell you about Pansare and Dabholkar and people like that, what has happened to them, because they, all of them stood up for rationality. And that is our struggle today. One of those who has been jailed and has suffered was here on this stage some time ago, Probir Prokayast, and all of you know what he has gone through, and there are others who are going through similar circumstances and worse. As I have already mentioned, I have been watching your struggle from the margins and have little to add that can be of any value for you. Still, I would like to place before you a few questions
that have been bothering me. कुछ सवाल हैं जो बार बार परेशान करते हैं और उन सवालों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा. I raise these issues before you in the hope that you will be able to tell me if my doubts and questions are worth consideration or not, and if these issues mean anything. मतलब मैं ऐसे बिला वजह तो परेशान नहीं हो रहा हूँ. I am bothered about how easily science and technology are used as synonyms. टेक्नोलॉजी ऐसे बताई जाती है जैसे वही विज्ञान है, और इससे जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो समझना जरूरी है. आईआईटी से जो इंजीनियरिंग करके निकलता है हम उसे वैज्ञानिक समझते हैं, और ये जो हमने एक नया खेल शुरू किया है तो इसमें मेटलर्जिस्ट, धातु गला के उससे ढालने वाला जो आदमी है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है. A mere BSc who is just a metallurgist, he is presented to us as the greatest scientist this country has produced ever. और इसी वजह से इतनी आसानी से मिथक इतिहास बन जाते हैं. Mythology is presented as evidence of scientific practices. कि हमारे पास स्टेम सेल थेरेपी थी, कर्ण का जन्म साबित करता है कि हमारे पास स्टेम सेल थेरेपी थी, और गणेश जी साबित करते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी. और कोई चैलेंज नहीं कर रहा है. Nobody is challenging it. These two statements were made in the Indian National Science Congress, in the annual session of the Indian National Science Association. Some of the biggest scientists of this country are members of Indian National Science Association, and they sat there. Nobody got up to say, what are you talking about? And so in this circumstance, to talk of a scientific temper is a very brave act, and it invites special kind of attention. And if you persist with your work, be ready for that attention, because that attention is going to come visiting. And you know, strange kind of things are happening. How can a scientist agree to religious rituals being performed before a new scientific research project is launched? You make a new engine and you take it to a temple for the blessing of the god. What are we doing? You perform a project to study the functioning of the monsoons, and before that you organize Indra Puja. I know this because this is my subject. Professor Koteshwaram, who understood the phenomena of the monsoon, every time he started a new project, he used to organize elaborate Indra Pujas. How can you reconcile these two? But we have a large number of scientists who don't see any contradiction between these two. Constantly indulging in meaningless ritual and heading major scientific laboratories. You know, how can we organize rituals where a large number of the scientists, if they do not belong to a specific caste, they cannot participate in those rituals? And then you talk of a inclusive tradition, the great inclusive tradition, a tradition that keeps the Dalits, the tribals and women out.
how can you keep on talking of an inclusive tradition and keep on practicing this? So these are some of the issues that keep on bothering me. Sir, please, आप अपनी मीटिंग कर लें तो मैं हट जाता हूं. Can we hope for the spread of scientific temper when the highest authorities in our country stand up in defense of moribund and decadent ideas? The battle for establishing a scientific attitude to life cannot go hand in hand with our acceptance of caste discrimination. We cannot talk about the equality of all human beings as long as we keep a separate cup in our house for the maid who comes to make tea. We can't say we don't believe in caste and keep a separate cup for the woman who comes to wash our house. This is a contradiction that we'll have to resolve. Because if we are serious about scientific temper, you cannot be practicing casteism in your house. You know, so how can we say that we are in support of equal rights between all citizens when all of us males do not take 50% of the share in running the household affairs? We might be doing revolution outside, but at home, who makes the morning tea, who makes the evening tea, who makes the roti, who does the washing, who does the cleaning, who does the girls' homework, the children's homework? And how is it that we still allow somebody else to decide who we are going to marry? And we allow to be married in a community that has, or somebody who has been chosen by our parents. You can't have your cake and you eat it. You know, you can't be talking of liberation and equality and allow somebody else to decide who you're going to marry. Because these two cannot exist together. No matter how you tie yourself in knots, you cannot explain this. So that is something that bothers me. You can disagree with me, but the battle for democracy and inquiry and equality has to start with us. The struggle for establishing a scientific outlook is also a struggle for establishing an egalitarian society. And we have to be champions of these values, not only socially, but also in our own homes. We cannot agree to arrange marriages and talk of equality in the same breath. A society based on discrimination stemming from circumstances of birth and gender can never evolve into a society that encourages equality, and a society such as this can never help nurture a scientific attitude to life. This is essentially what I wish to underscore. Flowing from this are a few simple observations about issues of democracy that I wish to present for your kind consideration. We need to look at democracy not as the rule of the majority. This is a totally distorted definition of democracy. बहुमत की इच्छा से सरकार चलेगी तो वो डेमोक्रेसी है, no. Hitler ran a government based on majority support. I'm not talking of other governments running with majority support, but you will know what I'm talking about. A majority of this country practices caste discrimination. A majority of this country practices untouchability. A majority of this country
considers giving and taking of dowry as correct. Majority is not the measure. The measure of democracy is how secure are your minorities. And I'm not talking only of religious minorities. How secure are the Dalits? How secure are those who have been denied a voice for thousands of years? That is a definition of democracy. मैं बहुत साल पहले इसमें रांची में एक वर्कशॉप में गया था और वहाँ एक साहब मुझसे पहले भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी। मुझे पता नहीं कि वो कितनी सच थी, मैं उसको चेक तो नहीं कर पाया हूँ, पर उन्होंने ये बताया कि गांधी जी ने कहीं ये लिखा है कि अगर सारा देश एक कानून पास करना चाहता हो और एक व्यक्ति वो कहे कि अगर ये कानून पास हो गया तो मेरी जो पर्सनल स्पेस है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट होगा, एंड गांधी जी सेड अगर वो कानून पास हो जाता है तो वो देश डेमोक्रेसी नहीं होगा. दैट इज द लाइन ही ड्रू. हाउ सिक्योर आर दी माइनॉरिटीज? आजकल पार्लियामेंट में अल्पमत है उन्हें बोलने नहीं दिया जाता. Just on that definition, this parliament is not democratic. The very idea that you have parliamentary democracy, it means that the minority, the political trend that did not receive majority support, will have the freedom to say what they want to say, and the Speaker of the House is there to defend that right of the minority. It is the same principle that has to be applied to society. The minority has to have a right to not only express themselves, but to disagree with the majority. And their right to disagree has to be defended. That is what a democracy is. Now apply it to your own home. अगर बाप की ही चलनी है और बच्चों की नहीं सुनी जानी है तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं है. आप बाहर कुछ भी कहते रहें. अगर पति की ही चलनी है और पत्नी की कोई आवाज नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है. It is a very crucial question. When you talk of democracy, it is not only a political issue. It is a question of our existence as human beings. Do we give every other human being an equal right, the same right that we want for ourselves? That right has to be extended for every human being, and we have to fight for the right of every other human being to have the same rights. That is, to me, to my mind, that is how a democracy can evolve and flourish. So, democracy is a system of governance, the purpose of which is to defend the rights of the minority, to express itself, to disagree with the majority, and to stand up against the opinions of the majority. आप जब सरकार की नीति एनवायरनमेंट के बारे में है उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो आप क्या डिमांड कर रहे हैं? आप यही तो कह रहे हैं. जिस सरकार को बहुमत का समर्थन प्राप्त है उसकी नीतियां गलत हैं और ये कहने का अधिकार हमको चाहिए, और हम इस पे अभियान करेंगे, सड़कों पे आएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे. इस अधिकार के बिना तो कोई आंदोलन नहीं चल सकता, और इस अधिकार के बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है. अगर ये अधिकार हमको अपने लिए चाहिए तो हमको अपने घरों में भी ये अधिकार देने होंगे.
The majority in our country practices caste discrimination. We treat our tribals as uncivilized, and those that stand up for the domination of the upper caste refer to the Dalits as low-born and describe the tribes as vanvasis. एक पूरा पॉलिटिकल ट्रेंड है जो आदिवासी उनको मानने को तैयार ही नहीं है, वो उनको वनवासी कहते हैं। वनवासी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, दोज हु लिव इन द जंगल, जंगली। उनको आप मानव इंसान मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आप उनको वनवासी कहते हैं। और वनवासी कल्याण करेंगे आप। यू आर नॉट इवन प्रिपेयर टू गिव देम स्टेटस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। क्या कल्याण करेंगे आप? अब कुछ नया सिलसिला शुरू हुआ है फिलहाल कुछ दिन से। Those that have dominated the majority in this country, they are a small minority, but they have dominated the majority because of the order of things that we have. Now they are saying, we are the oppressed. Now it is those who subscribe to the Brahmanic ideology हमारे साथ जाती हुई है, और उसके नतीजे के तौर पे जो हो रहा है वो आप जान रहे हैं। हर जगह खुदाई हो रही है, कहां तक खोदेंगे ये वो फैसला करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा खोद दिया तो ये संभव है कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे जहां मंदिर निकला है उसके नीचे बौद्ध विहार निकले। आप वहां तक नहीं जाना चाहते, आप सिर्फ सरफेस पे खुरसना चाहते हैं। उसके नीचे गए तो आपके भी कृत्य जो है वो जाहिर हो जाएंगे, तो इसलिए आप उसके नीचे नहीं खोदना चाहते। अभी केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, 6 महीने भी नहीं हुए, एक गौतम बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार बना दिया गया था, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर से दोबारा बौद्ध विहार बना है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारी मिसालें हैं। तो अब मैं माइनॉरिटी के अधिकारों पर जो इतना जोर दे रहा हूं, उसकी एक बुनियादी वजह है, परिवर्तन हमेशा माइनॉरिटी लाती है। द मेजॉरिटी इज ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटस को, ऑलवेज। When Galileo said that the sun does not revolve around the earth, it is the other way around, he was in a minority of one. He was the only man in the world saying that. The time when everybody was talking of the great productive forces released by capitalism, there was one man who said this is the most exploitative system that humanity has created. He was then in a minority of one. When there was this half-dressed, thin fellow who walked with a stick, and he said, we will defeat the imperialists without violence, he was in a minority. Change is always introduced by the minority, and that is why defending the right of the minority to disagree is crucial for us. Unless we do that, I don't think that we are going to change the circumstances in which we live. The All India People's Science Movement is a campaign that aims to change the way all of us think and behave and conduct ourselves at home, among friends and relatives, and in the world at large.
This is a movement to usher in fundamental changes. It is a long and arduous battle. It can be won, and it has to be won, especially if we want to be counted among the civilized nations of this world. Thank you. Thank you, sir. Not only science, society is also important. Social function of science is very much important. We received a greetings from the National Women Movement, IUDUA, from the GS of that organization. That greetings will be read by our Archana Prasad Ji. Sathiyo, friends, I'm reading this greeting on behalf of the Secretariat and the Central Executive Committee of the All India Democratic Women's Association. We are grateful that AIPSN has invited us for the Congress, and we would like to convey the following message. It will just take a couple of minutes. I will read it out. On behalf of the All India Democratic Women's Association, we greet the 18th All India People's Science Congress all success. This Congress is taking place at a time when democratic movements of the country are facing severe challenges. The ruling classes have unleashed economic and social policies that have increased inequality and benefited a few corporate friends of the government. The corporate Hindutva agenda of the government has polarized the society and spread hatred among the people on the basis of blind faith and superstition. We in the EDWA are also facing these challenges. Women are being mobilized through this process in a conservative, Manuvadi political program. The challenge before us is to come together to counter this agenda of hate through fostering of democratic values and scientific temper in quest for an equal society. The People's Science Movement has a glorious history of working amongst the people and countering regressive propaganda. The AIPSN and the EDWA have been collaborating at different levels to do this. We need to intensify this process and build joint campaigns to counter the pro-corporate communal agenda. We need to deepen our joint campaign against privatization and communalization of education. We hope the discussions in the Congress will find new pathways of achieving this. We wish the Congress all the success. AIPSN EDWA Unity Zindabad. On behalf of 18th AIPSC, we convey our gratitude to that organization also. Now I invite our beloved Secretary, General Secretary AIPSN, to speak on this session. साथियों, हम थोड़ा लेट हो चुके हैं और अभी 4 दिन हम लोग रहेंगे। मंच में हमारे साथी प्रेसिडेंट सत्यजीत रथ, सोहेल हाशमी जी, रघु जी, सत्यजीत चक्रवर्ती जी, हमारे मैडम चक्रवर्ती, कोमल,
ओपी और सभी साथी, डेलीगेट साथी, शुरू हमने बहुत अच्छा से किया। शुरू क्या हुआ था, शुरू सत्यजीत रथ जी ने पूरा एक जो पीपल साइंस आज की जो परिस्थिति है और पीपल साइंस मूवमेंट का क्या रोल है और किस तरीके से काम करना, पूरा जीवन से जुड़ी बात उन्होंने रखी। और अंत सोहेल आसमी जी ने बड़े अच्छे से किया, बिल्कुल अंत सही तरीके से हुआ इस इनॉग्रल सेशन का। इसी बीच पार्थ प्रतिम मजूमदार जी ने पूरी ओवरऑल चीज़ों को रखा, किस तरीके से हमारी सरकार किस तरीके से पूरा देश को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखना चाहती है, किस तरीके से देखना चाहती है, क्या कहती है मेक इन इंडिया को, ये बहुत अच्छा से खोल के रखा है। प्रवीण जी ने मीडिया को रोल को ज़्यादा विस्तार से रखा है, कैसे मीडिया भी बिक गया है, स्पेस नहीं देता है। और रघु जी ने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जो बहुत संकट से हम गुजर रहे हैं, वो क्लाइमेट का किस तरीके से असर पड़ा रखा। ये कुल मिला के जितनी सारी बात कही गई दोस्तों, ये बातें पिछले वर्षों से और ख़ास करके 2 वर्ष से भी हम इनको लेके इन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। और साथ में ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क अपनी 23-24 राज्यों में अलग अलग संगठन के द्वारा इन चीज़ों को नीचे ले जाने की बात कर रहे हैं। हमने 17वीं कांग्रेस में जिस बात हमने कहा था आइडिया ऑफ इंडिया, हमने बात किया था, जिस आइडिया ऑफ इंडिया को इस सरकार का बोलते हैं, हमने कहा ऐसे एक आइडिया ऑफ इंडिया, ऐसे ही इंडिया की हम बात करते हैं जहाँ सेल्फ रिलायंस हो, जहाँ डेमोक्रेसी हो, और जिस डेमोक्रेसी और सेल्फ रिलायंस से और जहाँ साइंटिफिक टेम्पर हो, और हम उससे विकास की बात करें। ये हमारा पिछला कांग्रेस का एक डायरेक्शन था, उसका करते हुए हम इस कांग्रेस तक पहुँचे। इसी बीच कई और परिवर्तन हुए हमारे देश में। सबसे महत्वपूर्ण 2 जो बातें हैं क्लाइमेट चेंज के अलावा, एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके जो उन्होंने बातचीत कही है वो सही बात है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो एक एक चीज़ को लेके जूझ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो साइंटिफिक टेम्पर की हम बात करते हैं, किस तरीके से हर स्तर पर रुका। अभी भी महिलाओं को डायन पूजा में देखिए कैसे देवी बनाया जाता है, किस तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, सारा पूजा पाठ को और बड़ा महिमा मार्जित किया जा रहा है। मार्केट और साथ में ये दोनों जुड़ के एक तरीके से महिमा बनाते हैं। ये एक नया तरीके से नया चरित्र हमारे सामने आ रहा है। ये भयानक रूप में हमारे सामने मनुस्मृति को किस तरीके से उस एजेंडा को लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे आने वाले समय में उसके साथ साथ हम जब बात करते हैं, हम ये बात भी भूल जाते हैं थोड़ी बात करने के लिए। फिर भी ऐसा नहीं कि सब कुछ वही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। अगर इतने सारे कानून बने, उदाहरण के लिए बता दीजिए, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, वो कैसे बना, किस तरीके से? ये सरकार अलग थे, बट उस कानून को बनाने में कितनी कोशिश की गई है, कितनी प्रक्रिया की गई है, कितना जमीनी से लेकर गया है, कितना संघर्ष किया है, फाइनली ये कानून बना। तो इस कानून भी जो बना वो हमारे अचीवमेंट है, उसको आगे ले जाने के काम हमको करना है। तो ये बहुत से चीज़ें हैं जिसको हमने किया भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा उसको कैसे आगे और अच्छे से कर पाएंगे, ये हमारे लिए मुझे लगता है कि एक चुनौती है। तो अभी हम जो 2 दिन का चैलेंज बहुत है, मैं सोहेल आसमी जी से फुल्ली सहमत हूँ, पूरी तरीके से सहमत हूँ। डेमोक्रेसी घर से होती है, हम बाहर बहुत बात करते हैं, घर से होती है हर चीज़। जितने संविधान के वैल्यू है, वो संविधान की वैल्यू को हम अपने जीवन से करते हैं, अपने घर से करते हैं, तो दुनिया और समाज हमको देखता है। उसका आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप करो, वो देखता है आपको, वो आपके भाषण नहीं सुनता है, आपसे देख के और अपने आप वो करने की कोशिश करता है। बहुत होता है ऐसा उदाहरण हम लोग के जीवन में बहुत है। जिस चीज़ को, जिस रूढ़ी परंपरा को जो समाज मानता है, अगर हमको डर लगता है, हमको लगता है कि अरे ऐसे कैसे होगा, समाज क्या बोलेगा, वो समाज की बात नहीं, हमारे अपने भ्रम है, हमारे मन की बात है। हम उस मन की बात को हम समाज को वो थोपते हैं कि समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, ऐसा बोलते बोलते हम इतने साल बिता दिए। तो इसलिए ये सब कुछ अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, अपने घर, अपनी परिवार
और उससे हम समाज के बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं माइनॉरिटी से है, मुझे लगता है कि ये सही बात है, उससे आप आगे वो स्ट्रगल बनता है, उसी से स्ट्रगल अच्छे आगे हो जाता है। तो इन बातों को लेके और जो सरकार के कानून है, सरकार ने जिस तरीके से अपना रही, वो अभी क्या है, अभी प्रदीप प्रकाश बैठे थे, क्या उनका दोष था, उनका क्या दोष था? हर्षमंदर बैठे, उनका क्या दोष था जो जिनके ऊपर लगा था? ऐसे कई लोग हमारे सामने जो अंदर जाते हैं, वो वही बात तो कर रहे थे ना, जो बात हमारे संविधान में वही बात कर रहे थे ना। तो एक तरीके से आपको ये कह के भय पैदा की जाती है, बोलोगे तो अंदर जाओगे, कानून के बारे में विरोध करोगे तो तुमको अंदर करेंगे। हम यहाँ बोल भी नहीं सकते और हमको बोल के एक तरीके से आपकी अभिव्यक्ति को खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसमें एक पीपल साइंस मूवमेंट के नाते, हाँ, जन विज्ञान आंदोलन के नाते हमको इसको आगे लेके चलना पड़ेगा। हम ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत सी चीज़ हमने हस्तक्षेप भी किया, कितना पोजीशन पेपर बनाया, कितना लोगों के बीच में ले जा गए। तो ये आगे इन चीज़ों को इतने बड़े संकट में, मैंने वी आर इन द वेरी डार्क टाइम्स, इस डार्क टाइम्स पे हमारे अपनी जो क्षमता है, हम ये मुट्ठी भर है, इस मुट्ठी को हमको बड़ा करना है और हम अपने आप को एक्सपैंड करेंगे और उसके साथ से हमको ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। यही मुझे लगता है कि आज के समय की ये हमारी चुनौती है। इस चुनौती को पीपल साइंस मूवमेंट अकेले नहीं कर सकता। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और ऐसे ही छात्र यूनियन, शिक्षक यूनियन और भी संगठन, अनहद और भी ऐसे संगठन जो साइंस को लेकर, शिक्षा को लेकर काम करते हैं, वो हमारे साथ है। हमको इनके साथ और आगे जोड़ना है, आगे बढ़ाना है, तभी हम इसके ये जो जितने हमारे जितना संकट है उसको हम मिलकर ही एक व्यापक रूप में हम इसको संकट को लेकर हम संघर्ष कर सकते हैं और साथ में हमको नीचे भी करके देखने की बात भी कर सकते हैं। ये हमारा पीपल साइंस मूवमेंट का हमेशा तरीका रहा है। दोस्तों, ये अब हम हर कांग्रेस की तरह इस कांग्रेस में भी हमारा 4 दिन का है। तो आज हम ये हमारा जो प्रोग्राम है, इनागुरल सेशन है, कल और परसों हर कांग्रेस में 2 दिन, तो कल 28 है और 29, 2 दिन हमारा टेक्निकल सेशन होगा। हमने इस बार, आपको ये मिल गया होगा फोल्डर, हम इस टेक्निकल सेशन में इस बार हम 9 थीम लिए हैं। सेल्फ रिलायंस लिए, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्पर, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, देन मीडिया, कल्चर, ये हम लगभग हम 9 हमने एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, ये हम 9 सेशन को लेके, 9 थीम को लेके हम 2 दिन जो हमारे काम जो लगातार कर रहे थे उसको लेकर हम 2 दिन टेक्निकल सेशन करेंगे। सुबह सप्लीनरी होगा और लंच के बाद जिस थीम को लेके हम बड़े काम कर रहे थे उसको लेके हम छोटे छोटे समूह में बैठेंगे। छोटे समूह में बैठ के हम सुनेंगे कि people have many more experiences. We will hear each other and how to go forward, that will be discussed in our small workshops. तो ये हमारा तो पूरा है। तो ये कल और परसों है और फिर लास्ट डे हम शुरुआत में हम जो पूरा जिस राज्य में करते हैं, जिस जगह पे करते हैं, उस राज्य के विकास की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डे हमारा डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल होगा और साथ में हमने पूरा लगभग 9 रिजोल्यूशंस हमने तैयार किया है। वो 9 प्रस्ताव को आपके सामने रखा जाएगा। आपके अप्रूवल से वो प्रस्ताव हम उसको अप्रूव करके आगे ले जाएंगे और साथ में हमारे अंत में हमारा वैलिडिटी सेशन होगा। इसके अलावा हर रोज़ हमारा कल्चरल प्रोग्राम है। आज 7 बजे से है, कल और परसों 2 दिन भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम हो गए। वो कल्चरल प्रोग्राम वो है जो हम इस कामों के साथ जो हमने जो गीत किया, नाटक तैयार किया, ये सब किया, उसको हम हर राज्य या शाम को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। 7 बजे से होगा, लंच से पहले। आज आपने वैलिडिक्टे इनागुरल में देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के साथियों ने कैसे वो पूरा लोकल इश्यूज था, किस तरह से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया अपनी कोरियोग्राफी के द्वारा। तो इस तरीके से भी हमारा मूवमेंट में हम लोग करते। तो मुझे लगता है कि ये आप सभी साथी डेलीगेट साथी हैं यहाँ पर, कुछ बाहर के साथी होंगे ही, लेकिन हम लोग बड़े ध्यान से जितने भी सेशन है अपने साथी लोग हर सेशन में शामिल हो। बहुत अच्छा हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर हमने आने वाले समय में लास्ट डे रखेंगे। एजुकेशन को हमारा दूसरा कैंपेन होगा, साइंटिफिक टेम्पर का, और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी हमने जिस तरीके से उसका असर क्लाइमेट का हीट वेव में हो रहा है और हेवी रेंज पे हो रहा है, अभी रघु जी ने रखा, उसको लेकर बड़ा कैंपेन हम प्लान किए हैं।
उसको लेकर आगे लाए जाएंगे, लेकिन उसको करने के लिए हमको एक समझ बनानी पड़ेगी। तो आप सारे चयनित डेलीगेट साथी आए हैं राज्यों से, तो इसलिए आपको ये पूरा सेशन में रह के एक समझ बनाएंगे ताकि आप उसको आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Ashaji. Now I request Professor Satyajit Chakraborty, our Joint Secretary AIPSN, as well as the Working President of Organizing Committee 18th All India People's Science Congress, to give vote of thanks. We are almost at the end. I think we are running my delivery some few minutes late, because in my delivery, if I miss some things, that will be injustice. Honorable Presidents, Professor Paramita Chakraborty, Professor Sohail Hasmi, Professor Dr. D. Raghunandan, Satyajit Raut, Honorable Chairman of All India People's Science Congress Organizing Committee, Professor Suimal Sen, Professor Parthraboti Mojiar, who are not with us, but I give from my core of my heart and from all of us, from my core of my heart, we give the sincere thanks for that. The persons like that at that age, they are coming with their all difficulties, with the call of People's Science Movement Network. They feel that it should be advanced and it should be propagated throughout the country to make the country beautiful. That is their motive, intention. That is why they are coming, and they are spending with time with their all sorts of physics. Actually, the 18th All India People's Science Congress process, it's a process. It's an event of the All India People's Science Network. The process starts on 28th February. Basically, on the 27th February, in the PBBM state office, I think whatever I call, there is an All India People's Science Network Executive Committee. On that Executive Committee meeting, we decide that 18th All India People's Science Congress will be held at Kolkata. And we accept that challenge. And this process is this process is started within the organizational defined meeting, the formation of the 18th All India People's Science Congress Committee on 14th July. From July on the August, all of you know, even here already discussed, we are facing a very shameful event of our society. That is the case of a Arjikar. A doctor is not secure in his working place. I think all the delegates saw that the civil society movement throughout the state, every walks of life, they are on the streets. We, the People's Science Movement, we are also involved in that state. Even today, if you go to the Dharmotala, that is the center of our communication centers, planet, doctors' platform, Abhaya Mancho, they are agitating, they are obstacle. Even that part, our PSM leadership also participates there. These things, that is from 9th August, almost 2 months, we can't do anything for the progress or for the process of this 18th All India People's Science Congress. We get only 2 to 3 months. PBBM, BSPS and FOSSET plus 40 organizations, that is the organizing committee, we guess their heart
this from the organizing committee, I think it is from the AIPSC also, we give the heartiest thanks to them. The PSM cultural activists from different PSM organizations. Today we saw the PBBM, I think the Bihar, Ashaji, Maharashtra BGBS, Gyan Bigyan Samuday, and with the Muralidhar team, all they are performing that teams. We give the sincere thanks to them. Actually, science propagation also used for the last 40 years, it is developing using the cultural media. We give sincere thanks to the delegates from different parts of the country. Those who are coming from the different parts of the country with painstaking journey, troublesome journey, and immediately after they are joining this program, we give the sincere thanks to them. We don't know from the organizing committee, we are make proper accommodation or logistics system for them. Please bear with us, we give the sincere thanks to them. We give sincere thanks to the personalities, invited guests who are participated in the All India, will be participated in the All India People's Science Congress process coming days. We are agreed, who are already, some of them will come and some of them on the way. We give the sincere thanks. We give sincere thanks to this. Please listen, this is a University of West Bengal University of Animal Husbandry and Fisheries Science. This AIPSC is in collaboration with the WBAFS. We give heartfelt thanks to them because their whole round support to this campus, not even that giving the samples, their professors, their teachers, their research scholars, their PGUG students, their technical staffs, their non-technical staffs. You don't see them. Last 3 months they are preparing this ground for us. We give the sincere thanks to them. We have an idea of to hold this Congress. We previously in other institutional campus, but it is exceptional. It is really, really exceptional. I announced a name of the professor, that is the Professor Pradeep Das. I never saw such a person of methodological person. Under his leadership and with the organizing committee, we are in the process of this. Vice Chancellor of this university, when I approached before on the month of April, they accept these things. Not only accepting, he is accepting whole things. He is the chief patron of our Congress. Actually, he will not come because he is suffering from cancer, so he will not go outside all the time. We give sincere thanks to the APC Rai, Acharya Prafullo Chandra Rai Vigyan Mela committee. Actually, this science fair is a continuous fair. This time, this committee took the decision, they will be the part of this 18th AIPSC. That is why all the persons, all the students, all the organizations, those who are participants to enrich the AIPSC with an event of science exhibition as an addition. This is a feather to the AIPSC. We give the sincere thank to this All Mela Committee and All India People's Science Congress. We give sincere thanks to the People's Relief Committee, the doctors, they are supporting us all the times, not only People's Relief Committee and all the parts. We give sincere thanks to the Central CSI Lab, CMERI, IERL, CGCRI. They are supporting us. They are giving some, their director, what they think, what type amount of support. I just use the amount, it is not for the part, but their
attachment to process this Congress is very, I think it is very recalling, and we give the sincere thanks to the directors and all the institutions. Kolkata police and the fire brigade, they give us very good support. We give support from the Jadavpur University and Calcutta University as a whole, and from the teachers, then the teachers organization. We got support from the farmers organizations. We got support from the teachers movement. We got support the public sector organizations. That is the organizations from the financial institutions, that is the organizations like bank, LIC. We get support from the steel. We get support from the sale. All the supports come from their employees union. They are supporting us according to their ability. We get support from those who are from the throughout the country to hold this AIPSC. All the 40 AIPSC member organizations, according to their ability, they are supporting to hold this AIPSC. But not the least, we have to think about that. PVVM, BSPS and faucets member organization, who are the main responsible for this massive event, whose budget is 69 lakhs. All the PVVM district committee from Kuch Bihar to Sundarban, from Purulia to Purba Medinipur, all the district committee, all the units, still today, I can say, Pradeep can say more accurately, something round about 28 lakhs, they are collecting money from the peoples. Lastly, what I can say, the whole AIPSC process, All India People Science process, this is a public process. Janobigyan Andol, Janobigyan peoples are with us. By the support of the people, this Congress will be again. I hope we will complete it successfully, though at the moment we have some financial strains. But we can complete, this is our confidence. We can get the support. It's a People's Science Congress with the support of the people. Really, it's a People's Science Congress. Lastly, I give the sincere thanks those who are the tirelessly working in the different committee of the People's Science Organizing Committee, the office bearers, the leaders of the People's Science Movement activists, and the volunteers, the student of this PG student and the student of this university, undergraduate student, PG student and the research scholar, they are tirelessly do these things. We give the not but the least, this give the sincere thanks. We give the sincere thanks to this community. This is a very densely populated community in this area. This is not the land where the peoples are not living. Today is the some university and academic institutions where the peoples are not living. These university placed in a place where it's a densely populated place. So we get the support from the local community, সাধারণ মানুষের সাহায্য পেয়েছি। আমি এই কথা বাংলায় বলতে হবে এই কারণেই তারা বাংলায় শুনবেন। এই সাধারণ সমস্ত মানুষকে, সমস্ত ভলেন্টিয়ার, এই সকলের সহযোগিতায় এই অল ইন্ডিয়া পিপলস সায়েন্স কংগ্রেস এবং সবশেষে আবার আপনাদের বলছি যে সমস্ত ডেলিগেটস, all the delegates who are coming from all over the India, we give the sincere thanks from. Please bear with us. This is an event. It is an event. We are not getting money from any corporate fund, from any government institution. It is the money coming from the people. It is a People's Science Congress. So please bear with us. Thank you so much. Thank you, Sattuda. Now there is some event for inauguration of some calendars. I will request Asaji to declare that. साथियों,
हम बहुत खुशी से केरला शास्त्र साहित्य परिषद दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स का प्रकाशन करना चाहता है। एक है हमारा साइंस कैलेंडर, वो इंग्लिश भाषा में बनाया है, और दूसरा है के रेल प्रोजेक्ट का एक पार्टिसिपेटरी स्टडी रिपोर्ट। बोथ यहाँ मिलेगा आपको हमारे काउंटर में। ये आशा मिश्रा और जनरल सेक्रेटरी प्रकाशन करेंगे, और somebody in the dais will receive that. I invite आशा मिश्रा जी प्रकाशन करने के लिए। Okay. 2 minutes about this science calendar. Hello all. Let me introduce myself. I am Arun Ravi from Kerala Shastra Sahitya Parishad, and I'll be taking just 2 minutes introducing this calendar. This is called a science calendar because it talks about science, and all the markings or all the illustrations in this calendar is about science. So the idea is to present evolution as a concept. So okay, so the first page will be talking about Luca. Luca is the last universal common ancestor, and the last page is about Lucy. So the whole story of the evolution will be covered in this calendar, and it will also have a QR code which you can scan, and it will get you to a page, each page for each month, and it will showcase the happenings in that particular month related to scientific things. So we welcome all of you to come to our stall and buy the calendars at a very cheap price. Thank you. ये प्रकाशन होने वाला ये डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक केरला हाई स्पीड रेल के बारे में 1000 वॉलंटियर्स ये स्टडी में भागीदारी हुआ था, वो रिपोर्ट है इधर। पूरा देश में इस तरह का एक स्टडी अभी तक नहीं हुआ है। Friends, first of all, KSSP thanks the organizers for giving us this opportunity to release our science calendar and the People's EIA on Silver Line. You may be aware of the Kerala government has initiated a huge project by name the Silver Line project, which costs nearly about 1 lakh crore rupees without having a proper environment impact assessment or a detailed project report. The KSSP struggled for both the EIA and for the detailed project reports, but the government declined. In that particular juncture, KSSP tried to make a people's environment impact assessment by using thousands of its volunteers, and we codified this by using the most modern technology, and we are now releasing the book, and we are very much grateful to AIPSC
for handtaking this opportunity. Thank you very much. Friends, this calendar is prepared by Janavijnana Vedika Andhra Pradesh. Raghuji told that next year fully dedicated to environment and its impact. This calendar, all pages were dedicated to environment only. All the changes during the period over the environmental issues was given there. Thank you all for giving this opportunity. Thank you all. The inaugural session will be over after the performance of the Maharashtra people. Please sit down and see the song performed by Maharashtra people. I have an announcement. Someone has left one mobile. One announcement on behalf of the organizing committee. Tomorrow we will start sessions at 9:30 a.m. Tomorrow we will start our sessions at 9:30 a.m. The breakfast will be open for delegates from 8 a.m. The people who are staying outside the campus are being transported by our volunteers. The same systems will be operated tomorrow and today after the dinner. Dinner will be served from 8 p.m. These are the announcements from the organizing committee. Then other two things is to be announced. Number one mobile is found. Whose mobile is it? Please identify and pick up from Ashaji. Second is Tamil Nadu Science Forum Fellows lost 15,000 rupees of 500 rupee notes in a bundle sometime 1.5 hours before. If anyone found it, please give it to us or give it to the Tamil Nadu Science Forum peoples. Now, here cultural program will be here, and Norris ji is requested to conduct the cultural activity. हमारे महाराष्ट्र के साथी प्लीज स्टेज पे आ जाइए। महाराष्ट्र के साथी का गीत अनाउंस हो गया है, उसके बिना ये सेशन यहीं पे अटक जाएगा। प्लीज कम, प्लीज कम। महाराष्ट्र के साथी दीपक, विनायक, प्लीज कम। एंड हमारे साथी श्यामलदा, पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के साथी श्यामलदा, प्लीज श्यामलदा आगे का प्रोग्राम आप। फर्स्ट महाराष्ट्र फर्स्ट। Dear friends, we had a very brainstorming session where the senior people of People's Science Movement as well as very famous scientists working in our country, they delivered. Basically, they highlighted the issues which will be discussed in our Congress. But you know that we have also parallel cultural activities. Our cultural activists and groups, they have come from different states and they will gradually perform their cultural programs here. I request you that after that brainstorming session, we must follow the cultural activities which is being presented over here. We have
3 different states. Today they are performing their program. You have heard the closing song from Maharashtra friends. Firstly, they are Maharashtra, Noreshji, Maharashtra is first performing their program. Then we have other 2 states, they will perform gradually. And by this time, our dinner will be ready and you can comfortably go over there. Thank you very much. Noreshji, where's the साथियों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। जो साथी बाहर हैं, सुन रहे हैं, प्लीज कम इनसाइड। द कल्चरल प्रोग्राम इज स्टार्टिंग नाउ। प्लीज कम इनसाइड।
hello. Hello. Hello, 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 hello. Close में. Hello, 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 hello. करें शुरू? सीधा शुरू करते हैं. अनाउंसमेंट या गाने के बारे में सिर्फ यही है कि युवाओं के लिए एक अपील है कामगार और किसानों की तरफ से. शिकणाऱ्या भावार अर लिवणाऱ्या भावार वाचणाऱ्या भावार अरे रखडणाऱ्या भावार शेताच्या बांधावरन मी हाक तुला देतोय. जंगलाच्या गर्भामधन मी हाक तुला देतोय. मी शेतमजूर बोलतोय, मी आदिवासी बोलतोय. यंत्राच्या चाकामधन मी कामगार बोलतोय. अरे तुझी माझी एकी घडू दे, शेत माझं हसत फुलू दे. जंगलामधली पाखरं उडू दे, अन्यायाचं मूळ कुडू दे. हो लई वाट तुझी बघतोय, सूर्याची वाट बघतोय. लई वाट तुझी बघतोय, सूर्याची वाट बघतोय. तुझ्या कॉलेजाची बिल्डिंग लय मोठी आहे म्हणत्या. तू वाचतो तीर बाक लय भारी आहे म्हणत्या. तू बसतो तीर बाक लय भारी आहे म्हणत्या. अरे बिल्डिंगच्या कडीमध्ये, पुस्तकांच्या घडीमध्ये, बाकांच्या भटीमध्ये हो लय पिढ्या त्यात मेल्या, नाही पुस्तकात लिवल्या. लय पिढ्या त्यात मेल्या, नाही पुस्तकात लिवल्या. स्वतंत्र देश आहे तुझ्या पुस्तकात लिवलंय. स्वयंपूर्ण देश आहे तुझ्या पुस्तकात लिवलंय. लय सुखी देश आहे तुझ्या पुस्तकात लिवलंय. अरे अमेरिकेच्या जबड्याखाली, जागतिक बँकेच्या पंजाखाली, नाणेनिधीच्या ओझ्याखाली हो तुझा देश गहाण पडला, नाही पुस्तकात लिवला. तुझा देश गहाण पडला, नाही पुस्तकात लिवला. मी जंगलामध्ये लढतोय, तुला बातमी नसल कळली. मी शेत मागाया उठलोय, तुझी नजर नसल वळली. मी फॅक्टरी मागायला उठलोय, तुझी मूठ माझी वळली. अरे टाकते पेन, उचल गण, वडव मन, माझल रण हो लय वाट तुझी बघतोय, सूर्याची वाट बघतोय. शिकणाऱ्या भावार, लिवणाऱ्या भावार. शिकणाऱ्या भावार, लिवणाऱ्या भावार. थँक्यू.
सब साथी साथ में थोड़ा सा गाएंगे। हिमाचल के साथी है तो हिमाचल का साथियों से सीखा हुआ एक गीत है, वो हम पेश करेंगे। सगळे सोबत आहे। सारे सारे सा सारे सारे सा सारे सारे सा पप मगरे सा सारे सारे सा सारे सारे सा सारे सारे सा धा रे ग रे ग रे रे ग रे ग रे पप मगरे सा माना के जिंदगी अंधेरों में है घिरी, बोझ सर पे इतना जैसे कि हिमगिरी, दीप बन के हम जले अगर फिर अंधेरों से किसे हो डरे, दीप बन के हम जले अगर फिर अंधेरों से किसे हो डरे। हे सारे सारे सा सारे सारे सा सारे सारे सा धा रे ग रे ग रे रे ग रे ग रे पप मगरे सा आँखों में सपने है उजले कल के, आँखों में सपने है उजले कल के, हिम्मत से चलेंगे राही मंजिल के, हिम्मत से चलेंगे राही मंजिल के, रास्तों की ठोकरों का क्या, मुश्किलों की अब नहीं फिक्र, रास्तों की ठोकरों का क्या, मुश्किलों की अब नहीं फिक्र। सारे सारे सा सारे सारे सा सारे सारे सा धा रे ग रे ग रे रे ग रे ग रे पप मगरे सा सारे सारे सा सारे सारे सा सारे सारे सा धा रे ग रे ग रे रे ग रे ग रे पप मगरे सा। तू है अकेला ये कब कहा है, संग तेरे साथी ये कारवां है, संग तेरे साथी ये कारवां है, भावी पीढ़ियों को गर्व हो काम ऐसा आज कर गुजरे, भावी पीढ़ियों को गर्व हो सारे सारे सा सारे सारे सा सारे सारे सा सा रे ग रे ग रे रे ग रे ग रे पप मगरे सा सारे सारे सा सारे सारे सा सारे सारे सा सा रे ग रे ग रे रे ग रे ग रे पप मगरे सा। गम ये ना करना तू नींव में है, गम ये ना करना कसम लाएंगे खुशी को जीत गए, हमने ली है आज ये कसम लाएंगे खुशी को जीत गए। सारे सारे सा सारे सारे सा
re ga re ga re re ga re ga re pa pa ma ga re sa. Hey, sa re sa re sa sa re sa re sa sa re sa re sa sa. Re ga re ga re re ga re ga re pa pa ma ga re sa. Hey, pa pa ma ga re sa. Hey, pa pa ma ga re sa. Thank you so much. Dear friends, India is a very big country, but India is a country, not more than one. There are different kind of attempts, that's why we had to make this kind of comment. Let us go to southern part of our country. Tamil Nadu friends, they are here. So, you know, they have a very strong organization, TNSF, Tamil Nadu Science Forum. And the cultural premises of Tamil Nadu is also very strong, you know. So, we invite our Tamil Nadu friends to perform their songs. Thank you. Hello, hello, hello. Hello. என்னாலத்தான் எல்லாமாச்சு என்று சொல்லும் பெயர்களே, எல்லோராலும் எல்லாமாகும் என்றுணரணும் நீங்களே. என்னாலத்தான் எல்லாமாச்சு என்று சொல்லும் பெயர்களே, ये गाना जिस तरह की एक एकता के लिए एक गाना है. The work is only done by group of people, but not by an individual. This is the central theme of the song. என்னாலத்தான் எல்லாமாச்சு என்று சொல்லும் பெயர்களே, எல்லோராலும் எல்லாமாகும் என்றுணரணும் நீங்களே. என்னாலத்தான் எல்லாமாச்சு என்று சொல்லும் பெயர்களே, எல்லோராலும் எல்லாமாகும் என்றுணரணும் நீங்களே.
என்னாலத்தான் ஹே ஹே என்னாலத்தான் ஹோ ஹோ என்னாலத்தான் எல்லாம் ஆச்சு என்று சொல்லும் பேர்களே எல்லோராலும் எல்லாமாகும் என்றுணரணும் நீங்களே ஒரு கையை ஓங்கி ஓங்கி வீசினாலும் ஒலி இல்ல ஒரு கையை ஓங்கி ஓங்கி வீசினாலும் ஒலி இல்ல ஆஹா ஹே ஹே ஹோ ஹோ ஆஹா ஒரு கையை ஓங்கி ஓங்கி வீசினாலும் ஒலி இல்ல கைகள் சேர்ந்தாத்தான் சத்தம் வரும் இசையாகும் இரு கைகள் சேர்ந்தாத்தான் இசையாகும் என்னாலத்தான் என்னாலத்தான் ஹோ ஹோ என்னாலத்தான் எல்லாம் ஆச்சு என்று சொல்லும் பேர்களே எல்லோராலும் எல்லாமாகும் என்று உணரணும் நீங்களே தோட்டமாக மாறணும்னா பல மரங்கள் வளரணும் தோட்டமாக மாறணும்னா பல மரங்கள் வளரணும் ஹோ ஹோ ஹே ஹே ஹோ ஹோ ஹா ஹா தோட்டமாக மாறணும்னா பல மரங்கள் வளரணும் பாட்டாக மாறணும்னா பல சொற்கள் சேரணும் என்னாலத்தான் என்னாலத்தான் ஹோ ஹோ என்னாலத்தான் எல்லாம் ஆச்சு என்று சொல்லும் பேர்களே எல்லோராலும் எல்லாமாகும் என்று உணரணும் நீங்களே தனித்தனியா மேஞ்ச போது தாக்கியது சிங்கமே தனித்தனியா மேஞ்ச போது தாக்கியது சிங்கமே ஹோ ஹோ ஹே ஹே ஹோ ஹோ ஹா ஹா தனித்தனியா மேஞ்ச போது தாக்கியது சிங்கமே ஒன்றாக சேர்ந்ததனால் காளை கூட்டம் வென்றது ஒன்றாக சேர்ந்ததனால் காளை கூட்டம் வென்றது என்னாலத்தான் என்னாலத்தான் ஹோ ஹோ என்னாலத்தான் எல்லாம் ஆச்சு என்று சொல்லும் பேர்களே எல்லோராலும் எல்லாமாகும் என்று உணரணும் நீங்களே என்னாலத்தான் எல்லாம் ஆச்சு என்று சொல்லும் பேர்களே எல்லோராலும் எல்லாமாகும் என்று உணரணும் நீங்களே தேங்க்யூ தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் சாங் next song lead by Muthilashmi. This is a song. Yeah. This is a song of gender equality.
The voice is raised. The voice of women is listened by everywhere. She is coming out for all her liberations. This is the central theme of the song. Hello, hello. Ta-na-na-na, 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 ta-na-na-na. கேக்குது புது குரல் பெண்ணின் உரிமை போர் குரல் கேக்குது புது குரல் பெண்ணின் உரிமை போர் குரல் நாடும் வீடும் குடும்பமும் நலமாயாக்கிட எழும் குரல் நாடும் வீடும் குடும்பமும் நலமாய் வாழ எழும் குரல் தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா காலங்காலமாய் அடிமையாய் கணவன் சொல்வதே வேதமாய் காலங்காலமாய் அடிமையாய் கணவன் சொல்வதே வேதமாய் புதைந்து கிடந்தது பெண் குரல் புயலாய் எழுகுது புது குரல் புது குரல் புயலாய் எழுகுது புது குரல் தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா பெண்ணை அடிமையாக்கிய பழைய சமூகம் மாறுது பெண்ணை அடிமையாக்கிய பழைய சமூகம் மாறுது ஆணும் பெண்ணும் சமமெனும் அழகிய குரல் இங்கு ஒலிக்குது ஆணும் பெண்ணும் சமமெனும் அழகிய குரல் இங்கு ஒலிக்குது தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா பெண்ணை அடிமையாக்கிய பழைய சமூகம் மாறுது பெண்ணை அடிமையாக்கிய பழைய சமூகம் மாறுது ஆணும் பெண்ணும் சமமெனும் அழகிய குரல் இங்கு ஒலிக்குது ஆணும் பெண்ணும் சமமெனும் அழகிய குரல் இங்கு ஒலிக்குது தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா கேக்குது புது குரல் விண்ணையும் மீறிடும் பெண் குரல் கேக்குது புது குரல் பெண்ணையும் மீறிடும் புது குரல் பெண்ணை சிறையில் பூட்டிய கரங்களை எரித்திடும் தீக்குரல் பெண்ணை சிறையில் பூட்டிய கரங்களை எரித்திடும் தீக்குரல் தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா ஒவ்வொரு குரலாய் எழுகுது ஒன்றாய் சேர்ந்து முழங்குது ஒவ்வொரு குரலாய் எழுகுது ஒன்றாய் சேர்ந்து முழங்குது புதிய சமூகம் படைத்திட புது குரல் உங்களை அழைக்குது புதிய சமூகம் படைத்திட புது குரல் உங்களை அழைக்குது தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா தானானா தனனனா Object of the song. Okay. Sir.
ये गाने जिस तरह की औरत का जो आवाज है बाहर आती है, जो कोई लोग उनको गुलामी किए हैं उनको जलाने के लिए, उनको उनसे प्रश्न पूछने के लिए बाहर निकलती है, सब कुछ चीज इसके अंदर आ जाती है। बस थैंक यू सो मच। हाँ, फोटो हो जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के साथी आ जाइए। और गजब का कॉम्बिनेशन है, नॉर्थ इंडिया के म्यूजिशियन हैं और संगीत है जो गाया जा रहा है वो साउथ इंडिया का, फिर भी काम चला दिया है दोनों ने मिलके। वेरी नाइस, ग्रेट। हमारे म्यूजिशियंस के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमारे तमिलनाडु के साथी, पूरी टीम ने गाना गाया जोश के साथ। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मध्य प्रदेश, प्लीज कम नाउ, कम। Now onwards, every day we will have this program, every day from 6 to 8 p.m. at least, cultural program, drama, song, dance, 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8 cultural program. Please, 6 to 8 cultural program every day. तो ये खाने वालों को भी अब हम जाके बोल देंगे, खाना अगर उन्होंने पहले शुरू किया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, खाने में मिलावट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बददुआएं लग सकती हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को बहुत मुश्किलों से हर राज्य हमारा तैयार करके आया है। हमारे साथी तैयार हैं, मध्य प्रदेश के साथी। पकड़ो इसको लो, करीब करके गई, बिल्कुल करीब। आ गई यहाँ जवान। हेलो चेक। चालू तो है, आप बोलिए, थूकने से कोई फायदा नहीं। हेलो, 1 स्टार्ट करो। आ गई यहाँ जवान, मंजिलों को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवां कदम, मंजिलों को ढूंढते हुए, आग गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ हम, रागिनी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवां कदम, रागिनों को ढूंढते हुए। तो दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। तो दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। फूल दो नए खिलाएंगे, सादगी को ढूंढते हुए, भूत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए, आ गए यहाँ जवां कदम, मंजिलों को ढूंढते हुए। कौन की तरह दहेज है आज देश के समाज में, कौन की तरह दहेज है
हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्का को मैंने ही उगाया रे, गेहूं चावल मक्के को मैंने ही उगाया रे, चूल्हा भी बनाया मैंने धान भी पकाया रे, चूल्हा भी बनाया मैंने धान भी पकाया रे, कहूँ क्यों भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, हाँ कहूँ क्यों भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, कहूँ क्यों भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, कहूँ क्यों भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे, मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे, ईंटों को पकाया मैंने बंगला बनाया रे, ईंटों को पकाया मैंने बंगला बनाया रे, संसद का हर एक खम्मा मैंने ही उठाया रे, संसद का हर एक खम्मा मैंने ही उठाया रे, सौ जो फुटपाथ रे, ये मेरे लिए काम नहीं, हाँ सौ जो फुटपाथ पे ये मेरे लिए काम नहीं, हाँ रहूं जो भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, रहूं जो भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, ढाबे को चलाया मैंने मिलों को चलाया रे, ढाबे को चलाया मैंने मिलों को चलाया रे, ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, ताना बाना जोड़ के कपड़ा बनाया रे, सपनों के रंग से उसको सजाया रे, सपनों के रंग से उसको सजाया रे, मेरा सपन नहीं रे, ये मेरे लिए काम नहीं, हाँ मेरा सपन नहीं रे, ये मेरे लिए काम नहीं, हाँ कहूँ जो भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, हाँ कहूँ जो भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, शाहजहाँ के ताज को मैंने ही बनाया रे, शाहजहाँ के ताज को मैंने ही बनाया रे, मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे, मंदिरों और मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे, बांसुरी की तार और मादल को बजाया रे, बांसुरी सितार और मादल को बजाया रे, मेरा संगीत कहाँ रे, ये मेरे लिए काम नहीं, हाँ मेरा संगीत कहाँ रे, ये मेरे लिए काम नहीं, कहूँ तो भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, हाँ कहूँ तो भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, सपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे, सपने सजाएंगे जिंदगी बनाएंगे, उंगलियों को मोड़ के हाथों को उठाएंगे, उंगलियों को मोड़ के हाथों को उठाएंगे, हाथों को उठाएंगे जिंदाबाद गाएंगे, आसमां को छूएंगे जिंदाबाद गाएंगे, गाएंगे जब तक रे, जब तक काम नहीं, हाँ गाएंगे जब तक रे, जब तक काम नहीं, गाएंगे जब तक रे, जब तक काम नहीं, हाँ लड़ेंगे जब तक रे, जब तक काम नहीं, हाँ लड़ेंगे जब तक रे, जब तक काम नहीं, हाँ लड़ेंगे जब तक रे, जब
थैंक यू, शुक्रिया। कल जो स्टेट अपना प्रोग्राम पेश करेंगे उनमें उत्तराखंड, केरल, हरियाणा, उड़ीसा ये शामिल रहेंगे। और आज के प्रोग्राम की आखिरी गज़ल हमारे गज़ल एक पेश करने जा रहे हैं हमारे बिहार के साथी। श्यामलदा आइए, आप ही समापन कीजिए प्लीज। हाँ, ये गज़ल आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश होगी। उसके बाद में जिन्होंने खाना नहीं खाया है खाना। हेलो हेलो गॉडलेस लैंड। हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं आंसू मैंने। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था, भूलना था तो इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। Friends, you have special thanks. Even the dinner is there ready, but you are here for this cultural program. So you must have the special thanks for that. From tomorrow, our Congress will end at 6 p.m. in the evening, and dinner will start at 8 p.m. So we have a time for 2 hours, and during that period, our friends will perform their different cultural activities. Noriji has already mentioned there are a number of states who are left, so they will perform. Another announcement is there. On 29th, there will be a group of singers who are very famous in Bengal. They will perform a program on Sholil Chowdhury. You know Sholil Chowdhury birth centenary is going on, and he has given music in all languages, starting from Marathi, South Indian, Bengali, Hindi, etc., etc. So our friends, they will perform Bengali song, Hindi song, English song, and that will be a very good program. And another, you know that Baul song is here, and Shashwati is very famous for that. She is also coming over here, and she will perform Baul songs. And our friends from other states, they are performing their unique cultural activities. It's a unique experience for us. Generally, it is not possible to observe the cultural activities from other states, but there is a combination here. So we are really very happy to observe that. Thank you again. Thank you very much.
ये देखो जोड़ा केटे दिदा check test check check 1 2 hello check 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 1 check 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 1 check check